Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to the second session of today's. Am I audible? Yes, you are, sir. I welcome you all to the second session of today's conference. Thank you so much for bearing us all the day, and I really congratulate all the organizing team. Let's start our today's session. We have a dynamic pharmacist with us. Let me introduce our speaker with you. His name is Dr. Laikur Rahman Khan. He's drug inspector at Primary and Secondary Healthcare Department, Tehsil Jonia, District Kasur, Punjab. He's author of 4 books, Forensic Pharmacy by Pharmacy Exam Guide, Pharmacist by Pharmacy Exam Guide, the PEG model paper, the exam guide for admin officer. He's formerly posted as drug inspector, Sangla Hills. He has been served as hospital pharmacist at THQ Hospital, Phalia, District Mandi Bahauddin. Beside this, he has been served as focal person, COVID-19 focal person, IRMNCH program, and focal person, print, electronic, and social media for the same hospitals. Sir, we welcome you to this prestigious, we can say, conference, and we hope we will learn more from you. Dr. Laikur Rahman. You asked him, can you contact Dr. Laikur Rahman, or can you go online? We are not getting your sound, sir. Hello, Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, sir. जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे सुन सकते हैं। Yes, sir. जी, जो टॉपिक है मेरा आज का वो है प्रिजर्विंग पब्लिक ट्रस्ट, द रोल ऑफ एथिक्स इन कम्युनिटी फार्मेसी सर्विसेज इन पाकिस्तान, व्हिच इज वेरी मच रेलेवेंट टू द डोमेन जिसमें मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ फार्मेसी का कॉन्सेप्ट।
तो यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि पब्लिक हेल्थ फार्मेसी है क्या। एक लेमैन से अगर पूछा जाए कि पब्लिक हेल्थ फार्मेसी क्या है, तो ये कहेगा कि नेक्स्ट यहाँ पे चेक कीजिए जी, ये है हमारी पब्लिक जो आपको इर्द गिर्द नजर आती है। ये हेल्थ, सेहत, और ये फार्मेसी, एक कम्युनिटी फार्मेसी जो आपको नजर, तो मिलके बन के पब्लिक हेल्थ फार्मेसी। ये एक लेमैन की डेफिनेशन है, ये आपकी बीइंग फार्मासिस्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल हम देखें कि डेफिनेशन क्या हो सकती है एक पब्लिक हेल्थ फार्मेसी की, तो वो है जो WHO बताता है कि इट इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग अ डिजीज, एक बीमारी को प्रिवेंट करना, प्रोलॉन्गिंग द लाइफ को प्रोलॉन्ग करना, एंड प्रोमोटिंग द हेल्थ, और हेल्थ को आपने प्रमोट करना है बाय द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, जिसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, नर्सेज भी हैं, जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। अगर हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की डेफिनेशन को देखें, तो वो है कि इट इज डिफाइंड एज व्हाट वी एज अ सोसाइटी डू, एक सोसाइटी के तौर पे हम कलेक्टिवली क्या करते हैं कि पीपल, जो लोग हैं, वो ऐसी कंडीशन में रहें कि वो हेल्दी रहें। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है पब्लिक हेल्थ फार्मेसी की, जिसमें फार्मासिस्ट आ जाता है तो पब्लिक हेल्थ फार्मेसी बन जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, आपने अपनी किताबों में पढ़ी हुई है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा फार्मेसी का सेटअप है, फार्मेसी लाइसेंस होल्डिंग सेटअप है, कि जहां पे फार्मासिस्ट डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद द पेशेंट्स, डायरेक्टली डील कर रहे हैं उनके साथ। और आम अगर हम बात करें तो रिटेल फार्मेसीज होती हैं, आपके सामने डिफरेंट सेटअप्स हैं, क्लिनिक्स है, फजल दीना सर्विड है, डिवागो है, और डिफरेंट है डिफरेंट प्रोविंसेस और पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कम्युनिटी फार्मेसीज हैं। इसके अलावा भी ऐसे सेटअप्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आगे बताऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा तरीका ये होता है कि मैं आपको बुकिश नॉलेज से थोड़ा सा हटके प्रैक्टिकल जो मैंने किया है या हम लोग देखते हैं अपने आसपास, उनसे आप लोगों को क्लियर करूं कॉन्सेप्ट्स को। कम्युनिटी फार्मेसी के एथिक्स क्या होते हैं? अगर एथिक्स से सिंपल बात की जाए तो ये मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपके गवर्न करते हैं एक्शंस को। अगर मैंने कोई भी काम करना है तो एथिक्स मेरे अंदर होंगे तो मैं मॉरली उस चीज को अपलिफ्ट कर सकता हूँ, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशन है या कोई और सिंपल काम है। तो कम्युनिटी फार्मेसी एथिक्स ये है कि फार्मासिस्ट अपने उन मॉरल प्रिंसिपल्स को, अपनी वैल्यूज को, अपने उस ओथ को अपलिफ्ट करते हुए वो सारे डिसीजन मेकिंग करेगा जो उसने खुद से वादा किया हुआ है या उसने पढ़ा हुआ है या फिर जो कानून उसको कहता है, और कोशिश करेगा कि पेशेंट जो है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाए, जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ है वो ऊपर जाए। अब सवाल ये है कि डू यू थिंक अ फार्मासिस्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फार्मेसी इन पाकिस्तान? कोई जवाब देगा? सारे ये समझते हैं कि फार्मासिस्ट हमेशा प्रेजेंट रहता है, यस और नो? नो, हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता। मैं भी ये कहूंगा हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज को चेक करता हूं इसलिए, और मैं ये आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्यों। अब कुछ बेसिक बुकिश बातें हैं जो मैं जल्दी से आपसे करूंगा, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल चीजों पे आपके पास आ जाऊंगा जो आपने इंप्लीमेंट करनी। जैसे कोड ऑफ एथिक्स क्या होने चाहिए फार्मासिस्ट के, कि जब भी एक फार्मासिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है तो उसने रिस्पेक्ट करनी है जो पेशेंट और फार्मासिस्ट का रिलेशनशिप है, ठीक है, जो ओथ उसने लिया है कि उसने किस तरह से पेशेंट को डील करना है, वो सब आपने किताबों में पढ़ा है कि रिस्पेक्ट देनी है, सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद आपने केयरिंग और कंपैशनेट होना है। एक फार्मासिस्ट ने किसी भी पेशेंट के लिए ये नहीं होना चाहिए कि आवाज आ रहा है खुद भी फार्मासिस्ट और वो उससे भी ऐसे बात कर रहे हैं जिससे वो और परेशान हो जाता है। बड़ा केयरिंग एटीट्यूड आपने रखना है। ऑटोनॉमी और डिग्निटी जो है पेशेंट की, उसको रिस्पेक्ट करना है, यानी कि वो अगर आपसे आके कोई बात करता है, वो पूछता है, कई फार्मेसी जहाँ पे अच्छे फार्मासिस्ट काम करें, सर्व करें, वहां पे आके पेशेंट पूछते हैं कि ये हम मेडिसिन कैसे लेनी है, क्योंकि उनको यकीन है आप पे। और ये यकीन, ये सीक्रेसी, ये जो उसका सारा कुछ है जो आपसे शेयर कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करके वो आपने मेंटेन रखना है। फार्मासिस्ट एक्ट्स विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। उसके साथ जो उसके को वर्कर्स काम करें, प्रोफेशनली कलीग्स हैं, चाहे वो कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ हैं, ठीक है, वो कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर है, या फिर कम्युनिटी फार्मेसी का फार्मासिस्ट किसी डॉक्टर को कॉल करके प्रिस्क्रिप्शन के वाले से पूछ रहे हैं, जो भी चीज है, बड़ी डिग्निटी के साथ, आपने इंटेग्रिटी के साथ वो चीज मेंटेन रखनी है। ये नहीं करना कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी और आप कहते थे ये तो है ही गलत। पेशेंट भी कंफ्यूज, डॉक्टर भी अनॉयड, और आपका अपनी वैल्यू जो आप गिरा रहे हो। फार्मासिस्ट मेंटेन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होगा तो अपना नाम पैदा करेगा, अदरवाइज he will just be a part of the crowd. Pharmacists respect the values and abilities of the colleagues and other health professionals. वही बात जो टीम वर्क की बात है, अगर आपने किसी भी जगह के स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाना है,
तो आपने टीम बिल्ड करनी है। अगर आपकी टीम नहीं, आप अकेले चल रहे हो, तो आप एक वक्त आएगा कि आप वो चीज जो है इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने स्मार्टली एक चीज को इंप्लीमेंट करना है, देन यू हैव टू बिल्ड अ टीम, और टीम के साथ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक पिक्चर है, यहाँ पे ये सर्वेड है मेरी तहसील के अंदर, यहाँ पे साथ खड़ी हुई फीमेल फार्मासिस्ट, ठीक है। पहले जब मैं इस फार्मेसी पे गया तो यहाँ पे मैंने चालान किया इधर का, क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट मुझे मिली नहीं यहाँ पे। और उसके बाद इनको मैंने कुछ चीजें समझाई। जब आप किसी को सजा और जजा देते हो कानून में रह के, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि उसको डिमोरलाइज कर दो। उनको चीजें सिखाते हैं कि अगर आपकी ये गलती है तो आपने किस तरह बेहतर करनी है। और अगली बार दोबारा जब मैंने वहां पे विजिट किया तो वो यहाँ पे मौजूद थे। एग्जाम्पलरी सेटअप था वहां पे, प्रॉपर मैंने वहां पे चेकिंग की और इनके साथ ये पिक्चर उतरवाई। क्यों? ताकि पता चले कि मैं यहाँ से प्रॉपरली मुतमईन हूँ। इनके जो रजिस्टर था, इंस्पेक्शन रजिस्टर, उस पर लिखा कि आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है, ताकि एक फार्मासिस्ट को अपनी अहमियत का पता चले। तो जब आप एक सिस्टम में काम करते हो, चाहे वो आप कहीं पे भी हो, इंडस्ट्री में हो, कम्युनिटी फार्मेसी में हो, हॉस्पिटल में हो, फार्मासिस्ट अपनी कदर करवाएगा और अपने फेलो कलीग्स की कदर करवाएगा। और टीम वर्क जो होता है वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मासिस्ट सर्व इंडिविजुअल, कम्युनिटीज एंड सोसाइटल नीड्स। इंडिविजुअल की भी, कम्युनिटी की भी और सोसाइटी की, सबकी नीड्स को पूरी करता है जब वो मेडिसिन के बारे में गाइड करता है, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी के सेटअप के ऊपर। फार्मेसी सीक्स जस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि फार्मासिस्ट को सोचना पड़ता है कि एक मेडिसिन शॉर्ट है मार्केट के अंदर, चाहे वो रॉ मटेरियल पीछे से नहीं आ रहा, चाहे कोविड आ गया, चाहे डेंगू आ गया। कोविड और डेंगू के अंदर हमने ये देखा कि मेडिसिन शॉर्ट हो गई हुई थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी, प्रॉफिटेरिंग हो रही थी, मुनाफाखोरी, जिसके अंदर मेडिसिन शॉर्ट थी। जैसे डेंगू आ गया तो पैराडोल शॉर्ट हो गई, आजकल टिग्राल जो है वो शॉर्ट हुई हुई है, कोविड था तो मास्क शॉर्ट थे, ठीक है। अब मास्क जब शॉर्ट होते हैं तो कुछ क्वांटिटी में फार्मेसीज वगैरह इनको सप्लाई होते हैं। जब सप्लाई कम होते हैं तो इन्होंने ये नहीं करना कि सब उठा के एक पेशेंट को दे देंगे। तो फार्मासिस्ट अपनी कॉम्पिटेंस को मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड करेगा कि उसने किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और हर एक को इतना इतना देना है कि उनका काम चलता रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो बड़ी मैटर करती हैं, पेशेंट के साथ किस तरह की हैं। आपने पेशेंस शो करनी है, गुस्सा नहीं करना, पेशेंट रहना है आपने जब भी कोई चीज को डील कर रहे हैं। यू हैव टू बी अ बेटर लिसनर। इस तरह से नहीं जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कि कोई पेशेंट आपके पास आता है, कुछ बोलता है, तो आपने इसको सुनना है गौर से, चाहे आपको पता है कि ये गलत कह रहा है, ये तो हवाई बात कर, इसको पता है कुछ नहीं, इसको गलत नहीं कहना, आपने इसको सुनना है और कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड एंड रेज द स्टैंडर्ड्स कम्युनिटी फार्मेसी सेटअप। आपने हेल्पिंग हैंड, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो कोई और फेलो फार्मासिस्ट है, चाहे कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, आपने हेल्पिंग हैंड करना। और इस तरह से कम्युनिटी फार्मेसी का जो ये चेन है, ये चेन रिएक्शन जो है आपने कंटिन्यू रखना है और एक टीम वर्क के तौर पे काम करना है। और लॉ की इंप्लीमेंटेशन जो है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एथिकली एक फार्मासिस्ट को, कम्युनिटी फार्मासिस्ट को पता ही नहीं है कि कानून क्या कहता है, तो एथिकल प्रैक्टिसेस कर ही नहीं सकता वहां पे, वो हर इलीगल काम करेगा। मैं आपको पिक्चर से आगे बताऊंगा कि कौन से इलीगल काम कहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये आपके सामने इंस्पेक्शन हो रही है और जो चीजें पूरी नहीं हो रही उस पर चालान वसील हो रहे हैं। मेरे साथ फीमेल ड्रग इंस्पेक्टर है और ये हम चेक कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे इंस्पेक्शन रजिस्टर्स हैं, नार्कोटिक कंट्रोल के रजिस्टर्स हैं और इनवॉइसेस और वारंटीज हैं जो हम चेक करते हैं कि कोई मेडिसिन की ट्रेल है या नहीं है, या कोई जाली है, सब स्टैंडर्ड है। अच्छा, कुछ बैरियर्स हैं एथिकल इश्यूज के अंदर। वो बैरियर्स क्या हो सकते हैं कि फार्मासिस्ट के पास लैक ऑफ टाइम है, बर्डन इतना ज्यादा है कि वो डील नहीं कर सकता। लैक ऑफ रिलायबल रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज ऐसे नहीं है कि वो आप उस चीज को जो चाहते हो इम्प्लीमेंट कर सको। पाकिस्तान के अंदर ऐसा अलमिया है कि आप करना चाहते हो, विल है, लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। इवन ऐसे सेटअप्स हैं जहां पे वो कहते हैं आप अपनी कैटेगरी दे दे लेकिन आप घर पे बैठे ताकि हम आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। लैक ऑफ स्किल्स इन मेकिंग एथिकल डिसीजन इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द एथिकल प्रॉब्लम। कभी कभी स्किल्स ही आपके नहीं होते कि आपने आइडेंटिफाई कर, जब प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज और लीगल कंस्ट्रेंट। फिर कई ऐसी चीजें होती हैं आपको नहीं पता कि इसमें कानूनी जो नुक्ते हैं वो कौन से, जहां पे आपको ब्रेक लगानी है। ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज डिस्पेंस कर रहे हो बीइंग अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, आपको पता ही नहीं है कि आपने नार्कोटिक कौन से देने हैं, कौन से नहीं देने, आप कौन सी ऐसी कंट्रोल्ड आइटम्स हैं, कौन से अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी आप करें। तो कई जगहों पे जब कानून के अगेंस्ट जाते हो तो
अनएथिकल डिसीजंस भी हो जाते हैं। हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है और टाइम टू टाइम गाइडलाइंस हमें आती है जिसको हम कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमारा ड्रग एक्ट कहता है, जो आपके सामने 1976 का। क्वेश्चन ये है कि नीड ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी सर्विसेज पाकिस्तान क्यों है। अब ये जो किताबी बातें मैंने आपसे की, ये ग्राउंड पे क्यों जरूरी है, ये अब आपने एब्जॉर्ब करना है और सुनना है। जितने यंग फार्मासिस्ट हैं, उनसे खास तौर पे ये मुखातिब हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस टीम का हिस्सा बने, उस सोच का हिस्सा बने जिसको मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ, जिसमें शुरू में मुझे काफी मुश्किल आई, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया। क्यों जरूरी है, ये प्रैक्टिकल कुछ चीजें जो मैंने की है, जब मेरे कैमरा से उतरी हैं, ये वो है। ये एक फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है। आप ये देख रहे हैं, देखने में आपको कितना स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मासिस्ट नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे है फार्मासिस्ट फिर। ये ऐसी जगह है, क्वैक्स जिनको कहते हैं, क्वैक यानी अताई, जाली डॉक्टर्स हैं, कोई डिग्री नहीं है, गांव में गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, इस तरह से ये स्टेप्स काट के रखी है, बेच रहे हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है हमारे हेल्थ केयर का। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपको पिक्चर बता दूं, ये एक कंप्लेन है, ये वहां पे मैंने रेड किया है। वहां पे जब जाके चेक किया तो एक बच्चा जो था वो चेक कर रहा है मेरा बीपी, और उससे मैंने पूछा कि ये नार्कोटिक स्टीरॉइड्स आपके पास, और कुछ अनरजिस्टर्ड आइटम्स मैंने पूछी, उसने मुझे फौरी ला के निकाल दी, ठीक है, कि ये है। और मैं यहाँ पे पेशेंट बन के बैठा हूँ, ये बीमार सी शक्ल लेके, और मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे मुजरिम किसको बनाऊं, इस बच्चे को बनाऊं। फिर वेट किया, इसके जो भी इसका वालिद था उसको बुलाया और फिर आगे एक्शन लिया। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीजें बिक रही हैं, ये भी क्वैक्स हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इलीगल, जो बाद में कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जाती हैं प्रोडक्ट्स, पता ही नहीं है कि उनके फॉर्म 6 फॉर्म 7 रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। और जब वो मार्केट में जाती है तो फार्मासिस्ट को नहीं पता कि ये अनरजिस्टर्ड है, बनी है। तो ये यहाँ पे हमें पता चलती है, फिर हम उसको डायरेक्टोरेट को कहते हैं, डायरेक्टोरेट फिर गाइडेंस जारी करता है, फिर वो फार्मेसिस्ट से शेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक्शन होता है, फिर इस तरह से सील्स होते हैं, चालान होते हैं। ये क्वैक्स हैं जो जाली डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये उनकी सारी पिक्चर्स हैं। ये इस तरह की कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है जैसे जिस्मानी और असाबी ताकत के लिए, वो ये एलोपैथिक पीस पीस के कूट कूट के उसमें डाली जाती हैं, ठीक है। लेकिन कोई फार्मासिस्ट, कोई यूनियन, कोई चीज अपने हकूक के लिए उस तरह से एक्टिव ही नहीं है कि हम इनके खिलाफ कुछ कर सकें, ठीक है। ये देखें, ये वो जाली डॉक्टर जिसकी मैंने खुद पिक्चर ली हुई है, क्या कर रहा था, इंजेक्शन लगाता है, वो इंजेक्शन वहीं पे लगा दिया, उसकी कोई डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा। एक तो काम भी इलीगल है, और काम किस तरह से कर रहे हैं उसकी हाइजीन देख लें आप, और ये लोगों को लग रहे हैं। और कई ऐसी जगहों में पकड़े जहां पर रीयूज ऑफ सिरिंजेस भी थे। तो आप खुद सोच लें कि हमारा हेल्थ केयर जो है उसका स्टैंडर्ड क्या हो चुका है गांव और पेरिफेरीज के अंदर। यहाँ पे एक बंदे को पकड़ने गए, कंप्लेन आई है, तो जिस बंदे को पकड़ने गए हैं उसने कहा कि जी मेरे किसी बेटी को किसी को इंजेक्शन लगा दिया एक क्वैक ने, और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया उसने कि जी इसको पकड़े। उसको जब पकड़ने गए और उस क्वैक को पकड़ने गए तो वहां के लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया कि आप हमारे साथ जुल्म करें, हमें पकड़े हैं। तो हमें एक अकेले इंस्पेक्टर को फील्ड में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सोचें कि अगर हम ये कम्युनिटी फार्मेसी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दें, एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दें, तो हम किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इन लोगों का कला कमा कर सकते हैं, और फिर फार्मेसिस्ट वहां पे प्रेजेंट हो और वो अपनी सर्विसेज दे। अच्छा, कई ऐसी फार्मेसी है, ये मैंने एक जगह से क्वैक से पकड़ी कि फार्मेसी वाले मेडिसिन क्वैक्स को बेचते हैं और उनसे पैसे लेते हैं मंथली, ठीक है, और वो मेडिसिन जो है वो लोगों को लगाते हैं। तो आप फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स के पेशेंट्स नहीं होते, क्वैक्स ये जाली डॉक्टर उनके अच्छे पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि वो उनसे ज्यादा मेडिसिन खरीदते हैं फार्मेसीज से, ठीक है। तो अगर एक फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मेसी पे होगा तो उसको पता होगा कि एथिकली, कानूनी तौर पे मेरी ड्यूटी है कि मैंने उनको नहीं बेचना, मैं उनको नहीं बेचूंगा तो उनको मेडिसिन नहीं आएगी, मेडिसिन नहीं आएगी तो किसी को इलाज कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं आपकी अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, सिल्डीनाफिल सिट्रेट, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड ड्रैब से रजिस्टर्ड नहीं है। और ये इसके ऊपर जब हम पकड़ते हैं तो फिर FIR और ये चालान या इनको सील करते हैं और फिर ड्रग कोर्ट्स भेजते हैं। ये देख रहे हैं आप, अनरजिस्टर्ड है ये जब चालान होता है, सील होता है, उनका FIR होती है इन पे, इनकी प्रोसिक्यूशन हम करते हैं, ये ड्रग कोर्ट में जाते हैं और फाइन और इम्प्रिजनमेंट भी होती है इनको, ठीक है। अब आपके सामने ये किसी ने मेडिसिन देखी है ये कभी? अच्छा, ये ओरिजिनल है कि ओरिजिनल नहीं है? ओरिजिनल नहीं है ये वाली। आपने जो देखी होगी वो हो सकता है ओरिजिनल हो, लेकिन जो पिक्चर में आपको नजर आ रही है ओरिजिनल नहीं है। इसी तरह से ये कितना बड़ा खेप है ये सिप्रोक्सिन का, ये ओरिजिनल नहीं है। एजोमेक्स आपने देखी होगी, आपने हो सकता है ओरिजिनल खाई, ये ओरिजिनल नहीं है जो आपको पिक्चर में नजर आ रही है। क्यों? ये जाली मेडिसिन है। और जाली मेडिसिन क्या थी कि हमने एसोसिएशन के साथ बात की,
हमें रेकी मिली कि यहाँ पे जाली मेडिसिन मार्केट में कम्युनिटी फार्मेसीज के ऊपर जब फार्मासिस्ट काम करते हैं, मेडिकल स्टोर पे वहाँ पे मेडिसिन है, हमने उनसे मिलके एक सप्लाई मंगवाई। जैसी वो बंदा सप्लाई करने आया, हमने उसके ऊपर रेड किया, उस सप्लायर को पकड़ा फार्मेसी के ऊपर, फिर उससे कहा कि फोन करो कि मैंने तुम्हें पैसे देने, जिसने सप्लाई किया उसको फोन किया, वो बंदा पैसे लेने, हमने उधर पकड़ा उसको, ठीक है, डीसी को, एसी को, डीपीओ को ऑन बोर्ड लिया, और इस तरह से हमने जाली मेडिसिन को पकड़ा। ये जाली मेडिसिन वो है जो आपको नेकेड आई को असली लग रही है, लेकिन ये फार्मेसीज के ऊपर बिक रही होती है, और हम लोग जब इन्हें पकड़ते हैं या डिटेल सैंपलिंग भेजते हैं तो वहां पे स्पूरियस निकलती है। ये एफआईए के साथ रेड किया हमने पिछले 2 हफ्ते पहले, ठीक है, एक फैक्ट्री पकड़ी कसूर के अंदर, ये सारी जाली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये मैन्युफैक्चर होकर कहाँ जाती है? फार्मेसीज के ऊपर जाती है, जहां पे आप फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हर चीज कानून के मुताबिक हो रही है, लेकिन जब आपको कोई चीज सस्पिशियस हो, किसी की लेबलिंग का इशू है, किसी की पैकेजिंग आपको मुख्तलिफ लगे, कलर का डिफरेंस लगे, तो आप अपने एरिया ड्रग इंस्पेक्टर को बताएं। ये आपकी एथिकल ड्यूटी है बीइंग अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये मशीनरी आप ये देख रहे हैं कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और ये हमने उसको सील किया। अब पंजाब ड्रग रूल की एग्जांपल मैं देता हूँ, सारे लोग सुन रहे हैं, वहां पे जितने फार्मासिस्ट जो किसी जगह पे कैटेगरी देते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक एफिडेविट देते हैं कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल ऑफ ड्रग्स। एफिडेविट ये देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो वहां पे मौजूद नहीं होते। फीमेल से मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ कि वो अपने किसी की शादी हो गई, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, किसी पे पाबंदी है, ठीक है, वो वहां पे खड़े होके उस इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकती जो हमारी पब्लिक डीलिंग वाली है। तो क्या करते हैं कि वो कैटेगरी रेंट आउट कर देते हैं। जब कैटेगरी रेंट आउट करते हैं तो क्या हुआ, कम्युनिटी फार्मेसी पे फार्मासिस्ट है ही नहीं। जब फार्मासिस्ट वहां पे है ही नहीं तो वो अपनी सर्विसेज क्या देगा? इसी तरह से अगर कोई जाली मेडिसिन पकड़ी गई किसी फार्मेसी से और वो अदालत चला गया केस, तो वो जो फार्मासिस्ट है जो वहां मौजूद नहीं है, वो ये नहीं कह पाएगी कि मैं तो मौजूद नहीं थी तो मेरी गैर मौजूद में हुआ। आप मौजूद नहीं है इसीलिए ये चीज हुई, ठीक है, और इसलिए आप अदालत जाएंगे और यहाँ पे जुर्माना भी होता है और कैद भी होता है। तो मैं अपनी फीमेल फार्मासिस्ट का खासतौर पर ये कहूंगा कि आप अपनी कैटेगरी रेंट आउट ना करें, और मेल भी कैटेगरी रेंट आउट ना करें, ठीक है। आपको फार्मेसिस्ट को पता होना चाहिए, हम चेक करते हैं कि एक्सपायरी है या नहीं है, तो ये एक एथिकल चीज है, आपको खुद पता होना चाहिए, आपने ऑडिट करना है। कोल्ड चेन मेंटेनेंस को आपने खुद चेक करना है कि फ्रिज का और आपकी जो प्रेमिसेस का टेम्परेचर क्या है। हम ये मैं MNP मुलर एंड फिप्स की जो वैगन आती है सप्लाई, उनको भी चेक करें, इनको भी मैंने जुर्माना किया वहां पे उस वक्त, और इन्होंने अच्छा किया कि अपनी चीज को मेंटेन किया, और फिर मैंने इनको अप्रिशिएट किया कि आपने अपनी जो AC था उसको लगवा लिया। तो ये चीजें सीखने की होती हैं सारी। सुपरविजन ऑफ सेल ऑफ नार्कोटिक कंट्रोल आइटम, जब हम जाते हैं तो ये आपके मैनुअल रजिस्टर्स जिन पे, अच्छा फार्मेसिस्ट क्या, फार्मेसिस्ट होता नहीं है, कभी कभी आता है तो लिखा होता है कि ये फलां डॉक्टर ने फलां पेशेंट साइन की होती हैं, ना वो डॉक्टर एग्जिस्ट करता है ना वो पेशेंट होता है, और वो एक जाली एंट्री बोगस होती है, वो हमें पता चल जाता है, हम वेरीफाई करते हैं कंप्यूटर से भी उसको, सब बोगस एंट्रीज होती हैं और उस पर चलाने होते फॉर्म। ये भी एथिकली एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि आपने जाली एंट्रीज नहीं करनी है, अपने सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाए कि आप उसको मॉनिटर कर सकें और कोई बोगस एंट्री ना हो। फार्मेसी का बोर्ड एज पर लॉ होना चाहिए, ये भी फार्मासिस्ट की ड्यूटी है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि बोर्ड उसका एज पर लॉ होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन होनी चाहिए, जो सिंपल है, आपसे डिस्कस हुआ। और यहाँ पे आप ये देखिए कि मैंने जब तहसील सांगला के हिल के अंदर था तो मैंने ये लिखा हुआ है कि गुड दैट फार्मासिस्ट इज प्रेजेंट प्राउड ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट। लोगों ने कहा कि आज तक कभी किसी ने कमेंट नहीं लिखा सर, लोग आते हैं चलान करते हैं, डांटते हैं और चले जाते हैं डरा के। मैंने कहा कि अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे और फार्मेसिस्ट को मेक श्योर करेंगे कि वो यहाँ पे होगा, तो मैं चाहे अकेला खड़ा हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा वहां पे, ठीक है। और वो किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2 से 3 फीमेल फार्मेसिस्ट ने वहां पे अपनी फार्मेसी का सेटअप स्टार्ट किया, और यही लाइकवाइज इन कसूर उन्होंने स्टार्ट किया, और उनको हम देखते हैं और वो वहां पे प्रेजेंट है। तो ये अप्रिसिएशन होती है जो कि आपने देनी है, और ये टीम वर्क है। टेम्परेचर मेंटेनेंस ही आपने करना है, और जब टेम्परेचर नहीं मेंटेन होता तो हम सैम्पलिंग वगैरह भी करते हैं, चेक करते हैं। एथिकल जो अनरजिस्टर्ड है वो आपसे बात होगी, वो आपने नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद हम मिलके और क्या काम करते हैं फार्मेसिस्ट के साथ कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकते हैं, तो वहां पे हम टीम वर्क करते हैं फार्मेसिस्ट के साथ, प्रोपराइटर्स के साथ, और फिर डिस्काउंटेड रेट्स पे इस तरह से हमने ये लिखा है, आप देख रहे हैं, कोविड हो गया, डेंगू हो गया, नहीं करते तो फिर इस तरह से कानून हरकत में आता है, सील होते हैं और चलान होते हैं। हम लोग और क्या करते हैं, जो मैंने अपनी तहसील में किया, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाई, ठीक है, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ठीक है। जैसे जाहिद आपको बता रहे थे कि लाइसेंस होल्डर्स होते हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्पेंसर्स भी हैं। हम उनके साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप कराते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और ये चीजें जो कानून है। जब कानून फार्मेसिस्ट को पता होगा
तभी वो इम्प्लीमेंट करेगा, तभी वो एथिकल होगा और तभी वो अपनी सर्विसेज देगा। और मैं कर सकता था क्या किया कि हर फार्मेसी के ऊपर एक बोर्ड लिखवाया कि डॉक्टर, उसका नाम RPH एज पर जो भी आपका HEC का क्राइटेरिया है, और मेक श्योर किया कि वहां पे प्रॉपराइटर एक चेयर रखे, टेबल रखे, स्टेशनरी रखे, लॉजिस्टिक सपोर्ट दो उसको, और अबव ऑल रिस्पेक्ट करे। और ये कहा कि अगर कोई प्रॉपराइटर से मैंने ये सुना या किसी से कि उसने मेरे क्वालिफाइड पर्सन की डिसरिस्पेक्ट की है फार्मासिस्ट की, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और अगर यही क्वालिफाइड से सुना कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो जाहिर बात है वो एज अक्यूज्ड होगा चलान पे। ये ऑनरशिप है जो हम दे सकते हैं। इसी तरह से हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए फार्मेसिस्ट, कम्युनिटी फार्मेसिस्ट के साथ काम करते हैं। मैंने किया, ये आपके सामने ब्रोशर्स और पम्फलेट्स हैं। DQCP मीटिंग्स होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये आपके सामने DC कसूर बैठी हुई है। हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, कम्युनिटी फार्मेसीज के इश्यूज, यहाँ पे फार्मेसिस्ट आते हैं हमारे पास। रेगुलेटरी एक्शंस हमने लिए प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ शॉर्ट ड्रग्स पे, और यही हम कम्युनिटी फार्मेसिस्ट से कहते हैं कि रिपोर्ट करें अगर कोई चीज शॉर्ट हो रही है या उसका नहीं है, तो ट्रैप की तरफ से हम फिर वो एक्शन लेते हैं, वो हमें आ जाती है गाइडलाइंस। मैंने अपनी तहसील में नॉमिनेट किया जो 24 घंटे एक फार्मेसी चलेगी। जब कोविड का दौर था और कोई भी बंदा अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा था, तब हमने फार्मेसिस्ट के साथ कम्युनिटी में मिलकर मेक श्योर किया कि 24 घंटे फार्मेसिस्ट रहेंगी। पेशेंट आएगा और फार्मेसिस्ट होगा वहां पे अकलौता खड़ा, जो उसको बता रहा होगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कोविड के बारे में उसको गाइड करेगा। ये मिलकर हमने टीम वर्क किया फार्मेसिस्ट के साथ, ठीक है। ये मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हम कोविड की रिपोर्ट्स मिलकर फार्मेसिस्ट के साथ दे रहे हैं। ये पैनाडोल जो शॉर्ट था, जी सिर्फ 2 मिनट, पैनाडोल जो शॉर्ट हुई तो हमने कम्युनिकेट किया, फार्मासिस्ट ने हमें, हमने GSK को चेक किया, उनसे कम्युनिकेट किया और उसकी इंश्योर कराया। अब एंडिंग के ऊपर सिर्फ वाइंड अप करते हैं, मैं कुछ आपसे रियलिटी चेक, जितने लोग पाकिस्तान में मुझे सुन रहे हैं, जितनी फीमेल सुन रहे हैं, मेल सुन रहे हैं, फार्मासिस्ट सुन रहे हैं, टीचर सुन रहे हैं, सीनियर जूनियर्स, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये सवाल का जवाब आपने सामने भी देना है, लेकिन आपने अंदर भी देना है, अपने दिल से भी ये चीज पूछनी है, ठीक है। और उसके बाद सोचना है कि मेरे सवाल वैलिड थे या नहीं थे। मैं अकेला निकला था जब ग्रेजुएट हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी से, तब से ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जब मैं आपकी तरह यहाँ बैठा होता था, मैं पूछता था कि काश मेरे पास कुछ ऐसी पावर आए कि मैं उस जगह पे पहुंचूं जहां मैं इंप्लीमेंट कर सकूं चीजों को। जब मेरे पास आए तो जितनी मेरे पास पावर है मैं उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। ये सवाल है, इनके जवाब आप खुद से भी पूछें और मुझे भी बताइएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी रेंट पे दी होगी, ठीक है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आप खुद से पूछें। ऑब्वियसली बहुत सारी मेजोरिटी है जिन्होंने अपनी कैटेगरी रेंट पे दी होगी, वहां पे नहीं होंगे। अगला सवाल, इफ अ फार्मासिस्ट कैन नॉट वर्क इन अ विलेज और पेरिफेरी, हाउ टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। आप कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी को ऊपर लेके जाना है, हम सबने मिलकर कोशिश करनी है। अगर फार्मासिस्ट ही नहीं जाएगा पेरिफेरी में, तो जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, क्वैक्स हैं, अताई डॉक्टर हैं, टीके लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, अमवात हो रही हैं, तो फिर कैसे कम्युनिटी फार्मेसी ऊपर जाएगी जब कम्युनिटी फार्मेसी है ही नहीं पेरिफेरी के अंदर। तो कैसे हम मोटिवेट करेंगे फार्मासिस्ट को। हाउ मेनी ऑफ द यंग फार्मासिस्ट आर अवेयर ऑफ द लॉ, ड्रग एक्ट एंड रूल्स। जब आप फोरेंसिक को इतनी ड्राई तरीके से पढ़ाते हैं अपने 5वें साल के अंदर, कि आप आके 5 लाइनें पढ़वाते हैं, बच्चे को पता नहीं उसके ऊपर से गुजर जाती है। हम लोग जब ये पढ़ाते हैं तो हम ये परवाह नहीं करते कि बच्चों को हम लेके जाएं, राउंड्स करवाएं, ड्रग कोर्ट्स जो हैं वो बाहर से दिखाएं, हम उनको दिखाएं कि ड्रग कोर्ट की जजमेंट्स क्या थी कानून के अंदर। ये इतनी ज्यादा डायनामिक चीज है, अगर हम टीचर्स और हम सीनियर्स मिलकर चाहें तो हम उनको कानून का तब से बता सकते हैं जब से वो ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कितने लोगों को कानून का पता है, मेजोरिटी को नहीं पता। आवर टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज आर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और वन टीचर टीचिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अब आप मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह से है कि एक टीचर जो है वो 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। आइडियली मेरी सजेशन हमेशा ये होती है, हमारे सीनियर्स बैठे हो फर्दर गाइड कर सकते हैं इस पे, कि अगर क्लिनिकल का स्पेशलिस्ट है जो किसी हॉस्पिटल में काम करके आया हुआ है, वही क्लिनिकल का सब्जेक्ट पढ़ाएगा। जो मार्केटिंग में काम करके वही मार्केटिंग पढ़ाएगा। जो इंडस्ट्री में काम करके वही इंडस्ट्री पढ़ाएगा। जो कम्युनिटी फार्मेसी का स्पेशलिस्ट है वही पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और कवर कर रहे हैं और सिर्फ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो वो कैसे अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देगा और कैसे लोगों के दिमाग में बैठेगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। आर यू पेइंग इनफ टू कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब क्या आप लोग इतना पे कर रहे हैं किसी कम्युनिटी फार्मासिस्ट को कि उसके अंदर ये मोटिवेशन है कि मैंने यहाँ पे खड़े होकर काम करना है। लोग तो जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट चला रहे हैं वो ये कहते हैं कि आप यहाँ आए 18,000 कैटेगरी का ले लें, आप लोग ना, क्योंकि आपको हमें एक्स्ट्रा 45,000 पे करना पड़ेगा। तो जो 45,000 आपको पे करना है हर महीने का, वो हम जुर्माना या चलान करा लेते हैं इंस्पेक्टर से, और इंस्पेक्टर जब ड्रग कोर्ट में केस भेजेगा, वहां पे जब जुर्माना होगा हम यही 45-50 लाख वहां पे कर देंगे। जी लास्ट में, इफ नॉट पेड इनफ व्हाट मेजर्स ऑल
you all took as one community. आपने क्या measures लिए हैं एक साथ मिलके community pharmacy को ऊपर लेके जाने के लिए? Are you all even united? क्या सारे pharmacists association senior juniors united हैं? ये सवाल खुद से पूछें. Did you all do anything to improve the community pharmacy standards? क्या किया हम सब ने मिलके, including me? मैं ये सवाल खुद से रोज पूछता हूँ कि community pharmacy को improve करने के लिए क्या किया, और अगर कुछ लगता है कि नहीं किया तो अगले दिन जाके करता हूँ. Did you do anything other than social media posts and campaigns? Social media पे मैं देखता हूँ कि इसके खिलाफ ये कर दो, इसके खिलाफ ये तहरीक कर दो, क्या फायदा होगा? ठीक है, लीड बाय एग्जांपल करना होता है, निकलना पड़ता है ग्राउंड में और फिर काम करना पड़ता है. और मैं अपने यंगस्टर से कहता हूँ कि मेरी टीम का हिस्सा बने, मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ खड़े हैं इस चीज में. Are we ethical and honest with our profession? ये सवाल है, ये आप करें खुद से. How can we improve our profession? अब सबके बाद ये सजेशन देगा अपना प्रोफेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा. ठीक है, ये डिफरेंट इंस्पेक्शन रिलेटेड, कम्युनिटी रिलेटेड जो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ यूट्यूब का चैनल, जिसपे ये सारी वीडियोस आपके साथ हैं, और जो मैं शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर और आपने काम करना है. Thank you so much. ठीक है, और ये आपका कॉन्टेक्ट है, कोई भी मुझसे पूछना चाहिए, स्पेशली कोई यंगस्टर है जिसको गाइडेंस चाहिए, कोई भी किसी भी पाकिस्तान के कोने से मुझसे पूछ सकता है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much, sir. Thank you so much. We have learned so much from you. Over to you, Zanish. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I, Zunash Ahmed, welcome you all to the 4th International Innovation and Pharmacy Conference. The title for our next session is Pharmacy Practice Pathways from Community to Clinical Settings. Let me introduce our faculty. For this session, we will be having Dr. Ijaz Allah Chima with us. He is the founding dean of the School of Pharmacy at the University of Management and Technology. He previously served as program director for the 5-year M.Pharm program at the University of Birmingham. In this insightful session, we will embark on a journey through the diverse roles of evolving responsibilities of pharmacists, spanning from their traditional presence in community settings to their roles in clinical healthcare. So I request you all to please welcome Dr. Ijaz Allah Chima, and over to you, sir. Okay, thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I hope everybody can hear me loud and clear. If anyone Yes. can do. Okay. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, thank you very much for giving me the invite to share my insight on this important topic. But before I do so, I would like to first of all commend the excellent efforts of the organizers of Giving Back to Pharmacy in Pakistan, who have, mashallah, been successfully organizing these conferences for the last 3 years. And it's I must appreciate, and the whole School of Pharmacy appreciates your efforts. Indeed, the whole pharmacy community appreciates, and also the organizers and the collaborators this year, and the students and the listeners. So let me share my screen with you. Just bear with me. Can you guys see my screen? Yes, sir. Okay, so as my colleague just introduced the topic to you, it is about pharmacy practice pathways from community clinical settings. And just to comment on my passionate colleague, Mr. Laikur Rahman, who was presenting just before me. Laik, I would appreciate your excellent efforts in the community. You are the ones who are actually inspiring the young pharmacy students and also the graduates. We need people like you to motivate the others in terms of strengthening the pharmacy profession and also the community pharmacy. And actually, I was thinking that perhaps we would, I would have changed the order of my topic, which was translation from community clinical settings, and actually in Pakistan's context, perhaps we need more sort of strengthening towards the community pharmacy. But having said that, let's move on to the disclosures. Let's just get the disclosures out of the way. I have no financial relationship to disclose, and inshallah, I will not be discussing any off-label use or any investigation use in my presentation. So what I'll be doing in the next
probably 10 or 15 minutes or so. I'll try to keep it simple and brief, considering the time constraints. I'll briefly talk about the changing role of pharmacists, and just to bear in mind that this presentation has been prepared in the context of the global role of pharmacists, not precisely sort of keeping the Pakistan context. Of course, Pakistan is in reference, but we are talking about the global change or the evolution of the role of pharmacists. I'll briefly touch upon the responsibilities of community pharmacists, as Laik has already given a detailed what the role of pharmacists in community is. I'll also talk about the key skills and competencies for clinical pharmacy, and then we will be talking, probably spending a few minutes on the transition from the community to clinical settings. And of course, whenever there is a transition in any career change, there are always some challenges, but I am always on the I'm always on the sort of positive side. I always see things in a positive frame of mind, and wherever there are challenges, of course, it comes with bundle of opportunities. So we'll talk briefly about what are those opportunities for those community pharmacists who are considering a transition from the community to clinical setting. So if you talk about the evolution in the role of pharmacists worldwide, it's been going on for probably more than 2 decades. And I'm sure I have colleagues who have joined from abroad, and they of course, they would appreciate the fact that the pharmacy role has evolved significantly. If you talk about the specifically about UK, where I've practiced for most of my career as a pharmacy manager, I have seen the evolution going back early 2000, when the National Health Service in the UK sort of introduced this white paper, which was calling for the dominant role of pharmacists and sort of making them as a main key player in the triage or the triangle of the healthcare professionals. And we saw in the introduction of the community pharmacy contract in 2005, where they were asking for an extended role of pharmacists from the traditional role of dispensing towards the clinically oriented role. So in today's topic, please don't consider these as in isolation. The pharmacists who are working in community are also doing these extended roles, which we are going to talk about. So of course, with this expectation that the pharmacists are now playing a key role in the delivery of direct patient care, and also the expectation is patient-centered care. We have, as a pharmacist, we have the obligation to transform ourselves, to engage in the continuous professional development, so that we are fully equipped to meet the expectations of our public and our patients. So briefly, I'm not going to spend much time on this slide, is about the responsibilities of community pharmacists, whether you are practicing in Pakistan, and I'm sure that, as highlighted, there are, of course, role models for us, and we must appreciate and strengthen them. They are providing excellent service in terms of provision of counseling to patients about the correct use of medications. Then we have the clinical and accuracy check of prescriptions, which I'll mention briefly in the next slide. Safe handling of controlled medications, medication safety, the medication therapy management, for example, in the US, which is an integral service. Similarly, management of minor ailment conditions, immunizations, and I must pay tribute to all those pharmacists who have worked extensively and as at the front line during the COVID period, which we have witnessed
and alhamdulillah, it is now over. But the role of pharmacists was sort of brought to light when the pharmacists were actually involved extensively in the delivery of vaccination service. And I must pay tribute to one of my colleagues who sadly lost his life in London. He was a good friend of mine, and he was actually at the front line of providing the vaccination service. And unfortunately, he lost his life to COVID. So on the coming occasion of World Pharmacist Day, I must pay tribute to all those pharmacists who have worked at the front line. Similarly, running public health campaigns is something which the pharmacists can do, and the community pharmacists who are already doing. So just briefly, the clinical screening of prescriptions. So I mentioned briefly in the previous slide that we have the what are the considerations which community pharmacists or clinical pharmacists actually should bear in mind when in terms of screening the prescriptions. So first of all, of course, it's about you have to look at the age group, considering if they are elderly or children. Similarly, for pregnant or breastfeeding ladies, people with hepatic conditions, of course, as you can appreciate, and I'm addressing particularly to the pharmacy students, that these are the things which you would need to bear in mind when you are actually in your undergraduate programs, to focus on the clinical knowledge. Then, of course, the practicalities, the availability, duration of therapy, and so on and so forth. And of course, the legality of prescription needs to be assessed in order to make sure that the prescription is legally valid, besides being clinically accurate. So just briefly, if we move on towards the clinical pharmacy. So I know that, as I mentioned briefly, I don't need to reiterate this again, but the fact is that all these skills which I've highlighted on this slide, as you can see, is that pharmacists, whether they're working community or clinical, they have to have a strong clinical knowledge. Without this, we talk about I would like to emphasize this point briefly, that we as pharmacy or pharmacy professionals talk about and we sort of advocate for the extended role of pharmacists. For example, in Pakistan, we say that we need to have an extended role. The pharmacist's role should be recognized. But I always say this and always look at myself as academic institution, or also as the pharmacy students, that what are we doing to equip ourselves to sort of deliver those extended roles? Yes, the regulators need to look at this, but also the academic institutions and the educators also need to focus on building strong clinical knowledge for pharmacists, so that whenever they go in practice, in community, in hospitals, they can actually deliver those roles, and the other healthcare professionals, the doctors, the physicians, they can appreciate that, yes, these pharmacists do have the strong knowledge, and let's involve them. Then the clinical history taking, collaboration with healthcare providers. This is something which is extremely essential. We talk about the friction between the healthcare providers and also in terms of the sort of communication barriers between the healthcare professionals, other healthcare professionals like the prescribers and the pharmacists. But I must say that as I mentioned, that I always try to highlight the positive examples. I have the opportunity to, since I've been to Pakistan for 2 years now, I've been to certain hospitals in public sector as well as in private sector. No need to mention the names. You guys can guess. And you would be pleasantly surprised to see that there is a realization in those hospitals. If you talk about Lahore, Karachi, Islamabad, there is a realization that pharmacists' expertise should be utilized. And these pharmacists are actually working quite extensively, and sort of in the main, they're in the center stage. And they're actually doing the ward rounds. They're actually doing the prescription verifications electronically. So the future is bright, and we must have this must have this vision that in 10 years' time, the pharmacy profession, or the outlook of pharmacy profession in Pakistan would also change, inshallah. So critical thinking and problem-solving abilities, demonstrating professionalism. So just briefly, I know that we have limited time in terms of clinical structure, clinical history taking. This is something when we are talking about whether they're community pharmacists or clinical pharmacists,
pharmacists need to have a strong sort of understanding how to take a clinical history. It also applies when pharmacists are doing the medicines reconciliation. This is something which the advanced countries or the advanced healthcare setups are already have implemented this, and the pharmacists actually do take these histories at the time of patient admission. And similarly, it's about the health problems, lifestyle, including risk factors, family health, and so on and so forth. So I think we're approaching towards the end of this talk. So let's talk briefly about the transition from community clinical settings. And of course, when you talk about the transition as a community pharmacist aspiring to move towards clinical pharmacy, you would need to have sort of further CPD, which we call in short as continuous professional development, or you need to have certain further education. So I've listed few of the certifications which are provided in the US, and of course any pharmacist can obtain these certifications. Board certification in pharmacotherapy, certification in critical care pharmacy. These would enable you to sort of equip yourself to have the smooth transition from community clinical settings. And similarly, you can consider doing the MS in clinical pharmacy or pharmacy practice. And I know that in certain institutions, even in Pakistan, they are providing this MS in clinical pharmacy. So make sure you avail those opportunities. So clinical experience, of course, is important. And if you are a student, you need to start planning that how I can gain the clinical experience by sort of doing the internships in hospitals and also the residency programs. And I'm sure you guys will be aware that, mashallah, in Lahore, as well as in Karachi, in Islamabad, there are 3 major hospitals who are already providing this residency program. Shaukat Khanum, Al Khan, Shifa, all these are, mashallah, established centers, and they are providing this residency program. So you need to consider this. Right. So just before I conclude, the challenges and opportunities, I briefly mentioned that I'm going to talk about the opportunities more, because whenever there is a challenge, there is always an opportunity. So I've mentioned, you probably would see at the screen that there will be an increased workload. I'm not denying the fact that the community pharmacists are not doing anything less, because I myself has practiced for 11 years in UK as community pharmacist, and I'm fully aware that we never used to have a time to sort of sit and have a cup of tea. But what I mean to say in this slide particularly is that in the hospital or clinical settings, you sometimes and often actually deal with complex patients when you're doing the ward rounds for the ICU. Similarly, if you're doing the inpatient rounds, you would come across complex patients, which you don't tend to see in the community settings, because there you have prescriptions to deal with. So of course, wherever there is this increased workload, you also need to bear in mind that this brings up more exposure to you and more learning opportunities. So of course, you can gain a lot. Similarly, I mentioned one of these competencies about the interprofessional collaboration. And this is something which is essentially required when you are dealing with other healthcare professionals, and also doing the ward rounds as part of the multidisciplinary team, where the focus is that you have to work, and so you have to have a strong communication skills. And before I mention the opportunities, I must say that as academic institutions, including UMT, where I am working as the dean, and similarly I'm addressing to my colleagues in other institutions, that we need to transform our assessment tools which we use to equip our pharmacy graduates and pharmacy students to have these skills which I just mentioned briefly about. And this is which I'm talking about, the objective structured clinical examination. I'm sure all those colleagues who are, mashallah, practicing abroad and also they are studying abroad, they would appreciate that OSCE, in short, is something which is a very essential tool to equip with those opportunities, with those competencies. I've talked about the interprofessional communication. I talked about the clinical knowledge. All these can be assessed through OSCEs. And inshallah, here at UMT, we plan to introduce this in our coming semester at UMT. So opportunities. So
Of course, wherever there is an opportunity to have to deliver the patient care directly, this comes with a lot of satisfaction that you are actually involved directly. Similarly, pharmacist prescribing. I mentioned at the start that in 2005 the new community pharmacy contract came up, and also the change in the pharmacy contract in UK, which allowed pharmacists to prescribe. And I'm sure those who have joined us from UK or those who are practicing UK would appreciate and would agree with me that pharmacists, mashallah, are now actually prescribing in the UK in any clinical competence, and the focus is actually they have changed the curriculum of the MPharm program, the Master in Pharmacy program, where they now pharmacists now graduate with these prescribing skills. So of course there's an opportunity. And lastly is about the career advancement. The pharmacists have the opportunity to transform their career. So with a note of thanks, I conclude that the role of pharmacists has evolved, and with this advancement in the role of pharmacists, or the evolution of the role of pharmacists, there are opportunities. Transition from community to pharmacy, clinical pharmacy is challenging, but of course I mentioned about the opportunities, that this is something which the pharmacists or the future pharmacists must sort of look up to the bright future. So I think probably that was from me. If any of you have any questions, feel free to fire away or also email me and also you can visit the website for further details. So thank you for bearing with me for the last 20 minutes. And I wish all the best to the organizers for the rest of the presentations. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for that insightful session. And I would like to hand over things to Ms. Jannat for the next session. Over to you, Jannat. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, you are. Yeah. Assalamualaikum. My name is Sunil Fatma, fourth-year pharmacy student at University of Lahore, member of Pakistan Pharmaceutical Students Federation and co-lead at UAS. Welcome you all to this enlightening session. The title of our next session is Renal Transplantation, Patients and Medication Safety. And this session is organized by Giving Back to Pharmacy Pakistan. So for this session, we have Dr. Misha Jalil, the member of Renal Transplant Team, Research Committee and Ethical Committee in Multan Institute of Kidney Diseases, managed by Indus Hospital and Healthcare Network. So she has 7 years of experience in healthcare services and completed certifications of basic medication safety programs along with quality improvement and patient safety. So she's a PhD scholar and doing research in pharmaceuticals from Bahauddin Zafar University. She currently serves as the in charge of pharmacy services and pharmacy warehouse at MIKD. So please enlighten us with your knowledge. The floor is all yours, ma'am. Assalamu alaikum. Thank you, Ms. Jannat. Today I will be discussing renal transplant patient and medication safety. There are 3 phases of transplant. Am I audible? Ms. Jannat, am I audible?
Yes, you are. Okay, thank you. There are 3 phases of transplant: pre-transplant, inter-transplant, and post-transplant. Today, I will be discussing post-transplant phase. The content including will be pharmacological considerations, immunosuppressive therapy, clinical allograft rejection syndrome, long-term ambulatory transplant recipients, role of transplant pharmacist towards patient safety. What are the main risks for transplant patient? Transplant patient is not a regular patient. He or she is immunocompromised and is on immunotherapy for whole of his life. He or she is at increased risk of infection and prone to wide range of side effects associated with the regime. And there is always a risk of graft rejection. Immunosuppressive therapy includes induction therapy, which is intense prophylactic therapy given at the time of transplant procedure. Maintenance immunosuppressive therapy. This is maintained for the rest of their life. Rescue immunosuppressive therapy. Basically, it is an intervention therapy given at the time of acute or chronic rejection. Before moving towards the role of transplant pharmacist, I will give a quick review of core competencies a transplant pharmacist should have. He must have the knowledge of classification of induction and maintenance agents, the drugs included, their regime, and their side effects, so that he can treat accordingly. Drug-drug interactions, drug-food interactions. He shall be capable of identifying that if CNI levels are increased or if CNI levels are decreased, then how to adjust the dose accordingly. Which vaccines are contraindicated and which vaccines are safe. Live virus vaccines are contraindicated, while killed virus vaccines, including hepatitis A, B, and influenza vaccines, they are safe. And of course, being a pharmacist, he shall be capable and skilled in medication management. He shall know that which medicines that shall be stopped, like diuretics, ACE inhibitors, statins, and which medications need dose adjustments. And in case if the rejection occurs, then we have to identify that what are the reasons behind this rejection, whether the patient was compliant with the therapy or not, or used any nephrotoxic drugs, or due to complex regime, any interaction has occurred. These all shall be the knowledge. Okay, अब हम फार्मासिस्ट के रोल की तरफ आते हैं. बेसिकली जो टॉपिक आज मैं कवर कर रही हूँ कि फार्मासिस्ट का इस पोस्ट ट्रांसप्लांट फेज में क्या रोल है दैट ही इज प्लेइंग. Here in MIKD, we have done 56 successful transplants, alhamdulillah. For the patient care, we are practicing ASHP guidelines, and transplant pharmacists fulfill the responsibilities described in these guidelines. Transplant pharmacists act as a liaison between patient and team. We are involved in direct patient care. Transplant patients are susceptible to opportunistic infections, graft rejection, and multiple medication-related toxicities. So careful monitoring and management of these immunosuppressive therapy is required. Then from the inpatient surgical procedure to the post-transplant clinic, transplant pharmacist is involved in transition of care to have direct involvement in medicine reconciliation, conveying critical information, and ensuring patient safety. There must be a fixed time to take immunosuppressants. Like अगर उसने एक medicine सुबह 10 बजे खाई है, then he is supposed to take the BD dose at sharp 10 p.m. कोई जो time में 1 minute के 2 minutes की alteration is not acceptable. And then medicine adherence and education. इसमें ये है कि pharmacist must ensure कि जो patient है उसमें sense of responsibility है, उसने अपनी care खुद करनी है, वो ये wait नहीं करेगा कि कोई आए और आके उसको दवाई दे. He shall be responsible enough कि अगर उसकी दवाई 1 सेकंड के लिए भी लेट होती है तो उसका अपना जो transplant organ है वो reject हो जाएगा. Execution of protocols. इसमें मेडिकेशन रिफिलिंग के प्रोटोकॉल, इसका फार्मासिस्ट को अच्छी से कैपेबल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेडिकेशन रिफिलिंग के क्या प्रोटोकॉल हैं, medication assess and delivery. He shall be capable. As in Pakistan, we are facing medicine shortages of immunosuppressants. Transplant pharmacist has to ensure continuous non-stop availability of these life-saving medicines to save patient life.
Despite all these medication management and patient care, patients are still at risk for allograft rejection. Comorbidities are common after transplantation, like infection, diabetes, hypertension, hyperlipidemia, heart failure. And renal allografts are lost due to these disease states. These comorbid conditions should be managed following transplantation. Till now in MIKD, we have 56 transplant patients on board, and the number will keep increasing with continuity of services, inshallah. Therefore, a proper dashboard is necessary and mandatory to keep check on the patient previous medication, lab abnormalities, medication compliance, drug that may cause interaction, or any coordination issue. Last, in the end, I will like to share a take-home message that chronic kidney disease is a life we did not choose, but a life we deal with every day. Surgery, dialysis, transplants, these all are temporary ways to prolong a life. It's sad, but it's a truth that CKD is a silent killer with no cure. So raise awareness among people at risk for CKD about the need for testing and educate them about CKD, that how to manage their disease. That is the only way we can help our population to prevent from this transplantation stage. In the end, I will extend my gratitude toward the head of campus, Dr. Syed Ali Imran Zaidi, and all my seniors, Dr. Aslam Shah, Dr. Muhammad Zishan Mazhar, Dr. Arif Ali, Dr. Nayyar Salim, for their support and kind guidance. I am also grateful to Dr. Siddiqui and entire team giving back to pharmacy in Pakistan for giving me this platform. Jazakallah. Over to you, Jannat. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sharing valuable information with us. So now I would like to call next moderator, Sheikh Mohammed Saad, to continue. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I'm home. I hope I'm audible to all of you. First of all, thank you so much, Jannat, and thank you so much, Dr. Amisha, for such a terrific presentation. I will be moderating for Dr. Mehreen. So, Dr. Mehreen, अगर आप सुन सकती हैं मुझे, तो we are live now. अपनी slides जो है वो हम start कर देते हैं फिर. Yes, I can hear you, Saad. Dr. Mehreen, आप roster पे आ गई हैं? Yes, I'll start within a second. डॉक्टर मेरीन, आपकी स्लाइड्स ऑन हो जाए तो फिर मैं इंट्रोड्यूस करके सेशन स्टार्ट करता हूं. Assalamu alaikum. Am I audible? वालेकुम सलाम जी मैम. Okay. Okay, my topic of presentation is pharmacovigilance and area reportings, a pharmacist mentor. So, as I am currently serving as a clinical pharmacist pharmacovigilance officer in hospital as hospital drug inspector and in DHP Nankana. So, aims and objectives of my presentation. If I talk about कि मैं क्या discuss करना चाह रही हूँ इस presentation में, I want to kindly अपनी presentation play कीजिएगा slides. Just so let me
मैम आपकी स्लाइड्स जो हैं वो कॉन्फ्रेंस वाली उसमें विजिबल नहीं है, अब आई हैं। ठीक है, इट्स विजिबल नाउ। Okay, I was discussing that aims and objectives of my presentation. Actually, I want to aware people regarding pharmacovigilance. Importance क्या है pharmacovigilance की, ADR reporting की क्या importance है, और उसके अलावा हम कैसे ADR report करते हैं, उसका mechanism क्या है, और as a pharmacovigilance officer एक pharmacist public health sector में अपना कैसे role play कर सकता है, तो हम इस पे discuss करेंगे. First of all, I want to give an overview of pharmacovigilance. आप में से किसी को आइडिया है कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है? All the online participants, you are requested to drop your answers and comments in the chat box. I'll read it to you. Okay, anyone from you people? किसी को आइडिया है फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? Yes. यस मैडम, यूसीपी की तरफ से कोई बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स? Okay. अच्छा, फार्माकोविजिलेंस ना बेसिकली एक खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है. अगर हम बात करें कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है फार्मा एंड विजिलेंस, और बेसिकली ये फार्मा वर्ड जो फार्मा कौन से निकला, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्रग और मेडिसिनल सब्सटेंसेस. और जब हम बात करते हैं ना विजिलेंस की, ये एक लैटिन वर्ड है जो विजिलिया से निकला है, और इट मींस टू कीप वॉच, टू कीप एन आई ऑन, टू ऑब्जर्व समथिंग. तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो हम क्या समझेंगे कि टू ऑब्जर्व ड्रग इफेक्ट्स. बेसिकली हम ड्रग इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं अंडर द डोमेन ऑफ फार्माकोविजिलेंस. तो अब ड्रग इफेक्ट्स ऑब्जर्व कब करने हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये है. अकॉर्डिंग टू WHO फार्माकोविजिलेंस क्या है? इट्स द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स. कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटेक्ट. आप डिटेक्ट करते हैं कि कोई ADR तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो हमने फिर उसको असेस करना है, और असेस करने के प्रोसीजर्स हैं कि आप असेस करें कि बेसिकली किस वजह से हो रहा है. कोई पेशेंट की कॉमॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इश्यूज तो नहीं है, किसी और वजह से तो नहीं हो रहा. तो आप उसे जब असेस करते हैं फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज को कि बेसिकली ये इस इशू की वजह से हुआ है, और देन वी हैव टू प्रिवेंट इट. तो बेसिकली चार जो स्टेप्स है ना इसके, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन of adverse drug effects. This is the pharmacovigilance definition according to WHO. और next है कि why pharmacovigilance? This is important कि pharmacovigilance importance है क्यों, आखिर ये need arise कब हुई, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ कि हमें फार्माकोविजिलेंस की तरफ जाना चाहिए, हमें इस चीज को जो है वो हाईलाइट करना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट इज ओरिजिन. जिस तरह मैंने आपसे बात की कि जब वाई का वर्ड आया तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था. तो ओरिजिन ऑफ फार्माकोविजिलेंस की अगर हम बात करते हैं तो दो डिजास्टर्स हुए थे, सल्फानिलामाइड डिजास्टर एंड सेकंड इज थैलिडोमाइड ट्रेजेडी. अब सल्फानिलामाइड डिजास्टर की अगर बात करें तो बेसिकली ये मैंने एक एलिक्सर की पिक्चर लगाई है यहाँ पे, ये सल्फानिलामाइड एलिक्सर था, ठीक है. और ये आपने शायद अगर पढ़ा हो तो ये 4th ईयर के अंदर ना हमारा फार्माकोविजिलेंस का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने ये चीज पढ़ा था कि सल्फानिलामाइड बेसिकली 1937 की बात है. सल्फानिलामाइड एक एंटीबायोटिक है और ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो यूज होती है. अब हुआ ये था कि बहुत अच्छा काम कर रही थी और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इसने बहुत अच्छी एफिकेसी ली. अब नीड ये राइज हो रही थी कि जो बच्चे हैं ना, अब उसके अंदर हमने इस इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है. तो जब बच्चों के अंदर इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, हमारे पास ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल थी. तो हम लोगों ने उन्होंने ये सोचा एट दैट टाइम कि भाई हम इसका एलिक्सर बनाते हैं या सिरप बनाते हैं ताकि ये जो बच्चे हैं वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट हो सके, ठीक है. अब हुआ ये कि जब फार्मासिस्ट जो वो कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्होंने इसको सोचा, अंडर प्रोसेसिंग किया और उन्होंने इसको डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करने की कोशिश की कि किस में डिसॉल्व होता है ताकि हम इसको जो है इसको फॉर्मुलेट कर सके सिरप में या एलिक्सर में. देन क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट हुआ जिसमें डिसॉल्व हुआ सल्फानिलामाइड, वो बेसिकली था डाइइथिलीन ग्लाइकोल. डाइइथिलीन ग्लाइकोल वाज द सॉल्वेंट जिसके अंदर सल्फानिलामाइड जो एंटीबायोटिक है वो डिसॉल्व हो गई कंप्लीटली. अब उन्होंने उस वक्त ये चीज नहीं सोची कि बेसिकली ये जो सॉल्वेंट है ये पॉइजनस तो नहीं है टुवर्ड्स ह्यूमंस, टुवर्ड्स एनी ऑर्गन. तो उन्होंने उस चीज को मार्केट किया विद रास्पबेरी फ्लेवर कि बच्चों को जो है वो टेस्ट भी बिटर ना हो, उसको मास्क हो जाए, और वो हमारा मार्केट हो गया ये, और वो बहुत खुश के भाई बहुत अच्छा बच्चों का भी ट्रीटमेंट होगा. अब जब चले गए वो मार्केट में, उसके थोड़े टाइम बाद ही डेथ रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गई और ऑलमोस्ट 1 of 5 डेथ्स रिपोर्ट हुई है सल्फानिलामाइड डिजास्टर की वजह से. 1 of 5 डेथ्स रिपोर्ट हुई बच्चों की.
ठीक है। अब बात यह है कि जो डेथ्स हुई है वो क्यों हुई थी, बिकॉज उसने ऑर्गन डैमेज स्टार्ट कर दिया। सल्फानिलामाइड ने ऑर्गन डैमेज, बेसिकली सल्फानिलामाइड तो नहीं था, वो डाइथिलीन ग्लाइकोल था जो ऑर्गन डैमेज कर रहा था, और उसके ऊपर जो है वो वर्किंग हुई नहीं है, और अल्टीमेटली क्या हुआ, डेथ्स हुई। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ये राइज हुआ कि क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लिनिकल ट्रायल से गुजारते हैं एक ड्रग को, उसके डिफरेंट फेसेस होते हैं। प्री फेसेस हैं आपके, फेज 1, फेज 2, फेज 3, देन आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग ड्रग को डिफरेंट ट्रायल्स के ऊपर ऑब्जर्व करें। एंड देन थैलिडोमाइड ट्रेजेडी थी। अब आप ये बच्चा देख रहे हैं, कोकोमोलिया के साथ है। कोकोमोलिया के साथ बेसिकली ये शॉर्ट लिम्स हैं, शॉर्टन जिसके हैंड्स हैं। अब एट दैट टाइम थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हम इसे क्यों कहते हैं, ये एक ड्रग थी जो एज अ सिडेटिव और हिप्नोटिक जाती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा गया कि मॉर्निंग सिकनेस में भी यूज हो सकती है, मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको जब सुबह नोजिया होता है या वॉमिटिंग फील होती है तो वो ये ले सकती हैं, ऑफ लेबल यूज उसका। लेकिन बैक पे क्या था कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के ऊपर ये ड्रग स्टडी नहीं हुई थी। अब आप देखें, जब आप क्लिनिकल ट्रायल से जो ड्रग को गुजारते हैं तो डिफरेंट फेसेस हैं, तो आप जब एक पॉपुलेशन के ऊपर वो ड्रग स्टडी नहीं हुई है तो आप उस पॉपुलेशन को कैसे एक्सपोज कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को जब ये ड्रग दी गई तो बेसिकली उसने फीटल के जो ऑर्गन्स है उससे इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करके वो ऑर्गन्स डिवेलप ही नहीं होने दिए, कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज स्टार्ट हो गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुई और इस तरह के बच्चे पैदा हुए, और 10,000 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए इस तरह के। और अल्टीमेटली क्या है कि बहुत से बच्चों की डेथ्स हो गई, और मुझे नहीं लगता कि आज मतलब कुछ होंगे इस तरह के लोग जो अभी तक मौजूद हैं। ये क्या था कि एक ड्रग की सिर्फ और सिर्फ बैक एंड पे क्या स्टोरी है, आप लोगों को पर्पस ये है बताने का कि जो ड्रग है हमने उसको ऑब्जर्व करना है, उसके डिफरेंट इफेक्ट्स देखने हैं उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान भी, और आफ्टर एंटरिंग इनटू द मार्केट। अब देखें, हमारे जो इंसान है उनके ऊपर स्टडी हो रही है ड्रग की रादर देन एनिमल्स, लेकिन अल्टीमेटली जब मार्केट में आ रही फिर ड्रग के कुछ डिफरेंट इफेक्ट सामने आ रहे होते हैं, बिकॉज पहले वो 1000 पे या 2000 पे एक्सपोज हुई है। जब एक्सपोज टू द होल पॉपुलेशन, एक होल वर्ल्ड में जब एक्सपोज हो रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि डिफरेंट लोगों की फिजियोलॉजी होती है, तो अल्टीमेटली डिफरेंट इफेक्ट सामने आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को फार्माकोविजिलेंस का कॉन्सेप्ट इस तरह से ओरिजिनेट किया कि हम लोगों ने आफ्टर एंटरिंग इनटू द मार्केट भी उसको जो है इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है। देन एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस की बात करें तो बहुत सिंपल है कि हमारा एम है कि हमने पेशेंट केयर और सेफ्टी को इम्प्रूव करना है, और ये आप अपने घर से स्टार्ट करें। अपने घर में अगर आपके जो है फादर है, मदर है, उनको कोई ड्रग एडवाइस होती है तो आप प्रिस्क्रिप्शन को इवैल्यूएट किया करें, उसकी ड्रग्स चेक किया करें, देखें कोई इंटरेक्शन तो नहीं आ रही है, किसी की डोज तो नहीं गलत लिखी हुई है, और आपके पेरेंट्स को कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई साइड इफेक्ट ऐसे शो हो रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। तो आपको इस चीज को खुद इंश्योर करना है। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कोई भी चीज अपने घर से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर आप जिस सेटअप में भी जाते हैं वहां पे आप जाके उस चीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। आपने मॉनिटर करना है एडीआर को, और अगर एडीआर आपको लगा है हुआ है तो आपने उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है और आपने उसको आगे पहुंचाना भी है। मतलब हमारा ये है कि हम लोग हॉस्पिटल के अंदर फार्माकोविजिलेंस सेंटर है और वो रिपोर्ट करता है नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर को, हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल विंग को, वहां पे रिपोर्टिंग होती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वहां पे वो जो है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, और अगर एक मल्टीपल सेटअप से, मल्टीपल हेल्थ फैसिलिटी से एक ही ड्रग से एडीआर रिपोर्ट हो रहा है तो फिर इस चीज को प्रोसेस किया जाता है, फिर फर्दर जो है उस पे एक्शंस लिए जाते हैं। देन हमारा क्या प्रमोट करने हमने फार्माकोविजिलेंस की अंडरस्टैंडिंग को और पब्लिक हेल्थ और मैनेजमेंट। सॉरी फॉर इंटरप्शन, जेंटल रिमाइंडर फॉर टाइम। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग्स। वाई टू रिपोर्ट, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने एडीआर क्यों रिपोर्ट करने हैं, अल्टीमेटली टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। और हु कैन रिपोर्ट एडीआरस? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डेंटिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, दे कैन रिपोर्ट इट। कि जब देखेंगे अगर किसी पेशेंट को ऐसा मसला हुआ है तो वो फार्मासिस्ट को रिपोर्ट करें। अगर होम टू रिपोर्ट, हम फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स अपने हॉस्पिटल में ये एजुकेशन देते हैं कि भाई अगर कोई मसला हुआ है तो आप हमें रिपोर्ट करें, आप हमें आके बताएं, हम लोग इसको नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर तक भेजें। तो हम लोगों ने ये अवेयरनेस खुद क्रिएट किया है, और ये पता होना चाहिए ना हो कि आप कहीं जाए और पता ही ना हो कि कोई आया था, तो आपने पहले जाके लोगों को बताना है कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर डोमेन और व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो दे ऑल हैव टू हेल्प यू। अगर रोल ऑफ फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर की बात करूँ ना तो पेशेंट फाइल्स रिव्यू, ये क्लिनिकल से थोड़ा काम जो है वो मिलता है, बिकॉज जब पेशेंट फाइल्स रिव्यू करते हो ना तो फिर आप उस पर देखते हो कि कोई ऐसे मसले तो नहीं है, फिर वो फार्माकोविजिलेंस से चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट करी होती हैं। तो पेशेंट फाइल्स हम रिव्यू करते हैं, हम रिपोर्टिंग्स करते हैं, पीरियडिटीज, फार्मासिस्ट वर्कअप ऑफ ड्रग थेरेपीज की, और एडीआर जो है उनकी भी रिपोर्टिंग थ्रू एमएसएस पोर्टल। एक पोर्टल है मेडिसिन सर्विलेंस सिस्टम, ये हमें जो उसका यूजर नेम और पासवर्ड मिला होता है हम लोग उसके थ्रू जो है वो रिपोर्टिंग्स करते हैं।
उसके अलावा बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ पीवी कमेटी मीटिंग्स, हम लोग मीटिंग्स कंडक्ट कराते हैं। फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर जो है वो पीवी कमेटी का सेक्रेटरी होता है, एमएस उसका चेयरमैन होता है। बहुत से डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस जो हमारे पास हैं वो उस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। उसके अंदर एजेंडा डिस्कस होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ, सिप्रो से बहुत से रिएक्शंस रिपोर्ट हो रहे हैं, हमने कमेटी बिठाई, मीटिंग डिस्कस की कि सर क्यों ऐसा हो रहा है। पीछे बाद में पता चला कि ऐसा है कि टाइम जो है उस प्रोटोकॉल जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल ठीक नहीं था, 1 घंटे में एडमिनिस्टर होने वो आधे घंटे में एडमिनिस्टर हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है कि बैक एंड पे लूप होल मिला हमें कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल में इशू था। तो आपको वहां पे काम करना है। जब आप उसको 1 घंटे के हिसाब से ड्रॉप सेट करते हैं तो रिएक्शंस नहीं होंगे। अब पीवी ट्रेनिंग सेशंस हैं, ये कुछ ट्रेनिंग सेशंस हैं जो मैं कराती हूँ विद डॉक्टर्स एंड स्टाफ नर्सेज। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जो बात की थी एडिया रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म्स पे, हाउ टू रिपोर्ट, तो इसके अंदर ना हमारे पास एक येलो कार्ड स्कीम का नाम आपने सुना होगा। येलो फॉर्म है, एक एलर्जी कार्ड है और एक जो है ड्रग कंप्लेंट फॉर्म है, जिनके थ्रू रिपोर्टिंग्स होती हैं। ये हमने प्रिंट करवा के अपने हॉस्पिटल सेटअप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाए हुए हैं। येलो कार्ड के ऊपर ये है कि जो डॉक्टर है जब वो एडमिनिस्टर कर रहा है या स्टाफ नर्स है तो कोई एडिया हुआ है तो वो उसको येलो कार्ड पे रिपोर्ट किया जाएगा। एलर्जी कार्ड की अगर बात करें, किसी किस्म का कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो उसे एलर्जी कार्ड पे रिपोर्ट किया जाएगा। और ड्रग कंप्लेंट फॉर्म हमने ओपीडी में रखवाए हैं कि ओपीडी के अंदर ऐसा है कि किसी डॉक्टर को आगे कोई बताता है पेशेंट के भाई मुझे ये मसला हो रहा है डॉक्टर, मैंने ये दवाई ली थी और मुझे ये मसला हो रहा है, तो उसको ड्रग कंप्लेंट फॉर्म पे रिपोर्ट किया जाएगा। और ये हमने प्रिंट करवा के अपने पूरे हेल्थ सेटअप में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। ये एमएसएस पोर्टल है, बेसिकली मैंने थोड़ा सा ये इसलिए पिक्चर डाली ताकि आपको आइडिया हो। एक जो है हमारा यूजर नेम और पासवर्ड, हम उससे लॉग इन करके फर्दर आगे से उस पर रिपोर्टिंग्स करते हैं। और मोर देन 100 इंटरवेंशंस आई हैव रिपोर्टेड टिल नाउ। 100 से ज्यादा इंटरवेंशंस हैं जो मैंने वर्कअप्स किए हैं और मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ। और ये कुछ हाइलाइट्स हैं। माय वर्किंग एज अ फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर। अच्छा, इसमें यह है कि हमारा मेड सेफ्टी वीक आया था तो उसके अंदर जो है ये उर्दू में हमने किया इसको कि अगर दवाई ली पेशेंट ने, कोई मसला हुआ उसको, तो फिर उसने जाके आके बताया डॉक्टर को। ये जरूर ये नहीं है कि मतलब कोई ऐसा मसला जिसको नहीं था लेकिन दवाई लेने के बाद हो गया, तो अवेयरनेस क्रिएट की कि आप जाके दोबारा डॉक्टर को बताएं, ठीक है। और इस तरह से ये मेड सेफ्टी वीक है, हम लोगों ने बैनर्स, ये मैंने खुद डिजाइन की हुई हैं चीजें, तो अल्टीमेटली मैं अपने हॉस्पिटल्स में लगाई। और बहुत अच्छा लगता था जब पेशेंट्स आके उसको पढ़ रहे होते थे कि पहले दवाई ली फिर ये किया, अगर आपको बंद भी करनी है तो डॉक्टर से कम्युनिकेट करें। और उसके हमने पॉम्पलेट्स बनवा के ये पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। अच्छा, ये कुछ कमेटी मीटिंग्स और सेशंस करवाए थे मैंने डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज के साथ अपने हेल्थ सेक्टर में। जो मेरा लास्ट सेटअप था कोर्ट मोमिन, बेसिकली वहां पे तो हमारी फार्मासिस्ट रिव्यू शीट तक नहीं थी फाइल्स के अंदर, वो हमने इनकॉर्पोरेट करवाई। बहुत सा काम किया। अल्टीमेटली जब रिएक्शन स्टॉप हुए, बहुत सी चीजें इंप्रूव हुई, तो आपको अच्छा लगता है, यू फील सेटिस्फाइड। और एक टेक अवे मैसेज है कि आप फार्माकोविजिलेंस की प्रैक्टिस को इंश्योर करें अपने जो है जगह पे, जो आपकी डोमेन है। आइदर यू आर रिटेल फार्मासिस्ट, आप हॉस्पिटल सेक्टर में, आप कहीं पे भी हैं, आप जो भी अपनी इनपुट दे सकते हैं एटलीस्ट यू शुड गिव। और प्रमोट कल्चर ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग। कोई भी एडीआर रिपोर्टिंग आपको लगती है कि आपको करनी चाहिए तो आप जरूर कम्युनिकेट करें और educate every individual regarding importance of pharmacovigilance. Any questions? Thank you so much, Dr. Marine, for a terrific presentation. Feedback is very important. All of you guys, please do give your feedback through the link. Now we're going towards our next session. So over to Rabia Afzal. Thank you, Saad. Assalamu alaikum. This is Rabia Afzal, final year pharmacy student from Hamdard University, Islamabad, committee member of the project department PPHSF, and moderator for this session. I would like to introduce our esteemed guest speaker, Dr. Sidra Noor, who is an assistant professor at the Department of Pharmacy Practice, Shifa College of Pharmaceutical Sciences, STMU. She has done her PhD from University of Peshawar, and her expertise include drug-drug interaction, drug safety, adverse drug effects, anti-tubercular medicines, infectious diseases, and anti-infective therapy. The title for our today's topic is Self-Medication Awareness, Safeguarding Pharmacist and Patient. I would like to invite Dr. Sidra Noor on the floor. Over to you, Dr. Sidra. Bismillahirrahmanirrahim. I hope I am audible to all of you. Thank you, Ms. Rabia, for my introduction. And secondly, I am also thankful to the organizers of Giving Back to Pharmacy in Pakistan for giving me opportunity to present in front of the pharmacy community. And Ms. Rabia have discussed my topic,
That's self-medication awareness, safeguarding pharmacists and patients. Okay. Looking for the definition of self-medication, you all people must be aware of its definition. And according to WHO, it is use of medicinal products to treat self-diagnosed disorders, symptoms, or the intermittent or continued use of a medication prescribed for chronic or recurring diseases or symptoms. Or it can be simply defined as the selection and use of medicines by individuals to treat self-recognized illnesses or symptoms, or the self-prescription of drugs not prescribed by a doctor. Actually, self-medication is a part of self-care. And what we call self-care is what people do for themselves to establish or to maintain their health, to prevent from the illnesses. Like अगर कोई हम अपने hygiene का ख्याल रखते हैं, अगर हम अपनी मेडिसिन्स को अप्रोप्रिएट तरीके से यूज करते हैं, अगर हम मेडिसिन्स का यूज खुद से करते हैं, that all is included in self care, not just related to the to the medicines, but also to the hygiene and for the physical activities we are doing. That all is related to self care, and the self medication is part of the self care. Okay, I will be focusing on the self-medication related to the Pakistan, because we are in Pakistan and we are serving here. So I will be more focused on the self-medication which is conducted in Pakistan. And most commonly medications that are self-medicated include analgesics, antipyretics, antibiotics, cough and cold medicines, and antacids. Besides these, tranquilizers and multivitamins and antihistamines are also used. You all people must be aware by the hazards of self-medication, but I will just give an overview that at individual level, self-medication can cause inappropriate medical advice. एक्चुअली पेशेंट खुद जो है ना मेडिसिन ले रहा है, खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू डायग्नोस कर रहा है अपने आप को और खुद से वो मेडिसिन ले रहा है, तो दैट मे बी इनअप्रोप्रिएट फॉर हिमसेल्फ. इनकरेक्ट थेरेपीज, पेशेंट जो है वो अपने ही सेल्फ डायग्नोसिस के थ्रू सेल्फ ट्रीटमेंट जो है वो ले रहा होता है. ठीक है, अब विच थेरेपी इज correct for him or which is incorrect for him. He's taking 2 medicines, he's taking 3 medicines, he's taking 1 dose, 2 dose, he's taking low dose, high dose. He don't know and he is taking it. Okay, he have no proper knowledge about this and he is taking. So he is taking an incorrect therapy for himself. Besides this, self-medication cause dependence. Dependence हम सिर्फ drug of abuse की बात नहीं करेंगे, but dependence हम हर एक medicines की बात करेंगे. जैसे मैंने आपको commonly used medicines का बताया कि उसमें analgesics, antipyretics भी है, तो patient इतना वो हो जाता है, dependent हो जाता है analgesics पे कि वो उसको थोड़ा सा भी pain feel होगा, he will use the analgesics for him. उसको थोड़े से भी फीवर के साइन सिम्टम्स होंगे तो वो क्या करेगा कि वो एंटीबायोटिक लेगा. उसको थोड़ा सा भी कफिंग स्नीजिंग होगी तो वो क्या करेगा कि कोल्ड एंड फ्लू के मेडिसिन लेगा. तो सिर्फ ड्रग ऑफ अब्यूज की हम बात नहीं करेंगे सेल्फ मेडिकेशन में, बल्कि हम जो नॉर्मली यूज्ड मेडिसिन है उसकी भी डिपेंडेंस की बात करेंगे. इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स भी कॉज हो सकते हैं सेल्फ मेडिकेशन से, बिकॉज पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ द करेक्ट डायग्नोसिस, नॉट अवेयर ऑफ द करेक्ट थेरेपी एंड ही इज यूजिंग इट. सो देयर मे बी चांसेस दैट एडवर्स इफेक्ट्स अकर. फार्माकोलॉजिकल रिस्क्स हो सकते हैं, दैट इज पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एंड पेशेंट इज टेकिंग दिस. पेशेंट के लिए प्रिकॉशनरी मेडिसिन है एंड पेशेंट इज टेकिंग इट. पेशेंट के में एडवर्स इफेक्ट्स कॉज हो सकता है और पेशेंट इज टेकिंग इट. ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंस, यू ऑल आर अवेयर ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो जो है सेल्फ मेडिकेशन से फर्दर प्रमोट हो सकता है. ठीक है, तो इट इज कॉजिंग अ बर्डन ऑन दिस एस्पेक्ट. इसके अलावा डुप्लीकेट थेरेपी हो सकती है
और ऑलरेडी पेशेंट को फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कोई मेडिसिन, और पेशेंट जो है वो अपनी मर्जी से कोई वही थेरेपी, वही मेडिसिन दोबारा किसी और ब्रांड की ले लें। इनकरेक्ट डायग्नोसिस वैसे ही हमने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा हैजर्ड्स जो है वो कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकते हैं सेल्फ मेडिकेशन के, जैसे हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की कि वो इफेक्ट हो सकता है सेल्फ मेडिकेशन की वजह से। हम अगर सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की, अगर हमें एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है मेडिसिन की और हम मेडिसिन को ले रहे हैं, दैट इज कॉजिंग वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस हो सकती है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन अगर नहीं हो रहे होंगे। इसके अलावा हम हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन किस तरह डालते हैं सेल्फ मेडिकेशन से, कि अगर हमें मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं और हम जाते हैं फार्मेसी से मेडिसिन इनटेक के लिए, ठीक है, मेडिसिन से के परचेज करते हैं और यूटिलाइज कर रहे होते हैं, या फिर हमने काफ़ी सारी मेडिसिन परचेज की होती है और घर में रखी होती है, तो हम क्या कर रहे हैं कि फिर जो कम्युनिटी फार्मेसीज है वो अपने लिए लॉट ऑफ मेडिसिन परचेज करेगी, किस लिए, ताकि वो सेल आउट कर सके सेल्फ मेडिकेशन के लिए। और ये एक पाकिस्तान में स्टडी भी हुई थी कि जिसमें उन्होंने देखा था कि हम ऑलमोस्ट 30% मेडिसिन जो है वो सेल्फ मेडिकेशन पर्पसेस के लिए परचेज करते हैं। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन की जहाँ पे हम हैजर्ड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इसके बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स इन अ सेंस कि अगर सेल्फ मेडिकेशन अप्रोप्रिएट तरीके से हो रहा हो तब फिर इसके बेनिफिट्स भी है। किस तरह की, यानी कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी है, हमें यानी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, हमें ओपीडी क्लिनिक नहीं जाना पड़ता, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, एंड हमारी जो थेरेपी है वो घर में ही हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो थ्रोट इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड इजिली एट होम। बिसाइड्स के ये हम जाए ओपीडी विजिट्स करें, वहाँ पे वेट करें, वहाँ पे डॉक्टर्स का टाइम वेस्ट करें और फिजिशियंस का टाइम वेस्ट करें, नर्सेस का टाइम वेस्ट करें, और हम इसको खुद ही घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, बट उसको अप्रोप्रिएट तरीके से यूटिलाइज करें मेडिसिन को। इसके अलावा क्विक एक्सेस ऑफ मेडिसिन हो सकता है, इजीली घर में अवेलेबल है मेडिसिन। कोई भी साइन सिम्टम्स है जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, माइल्ड टाइप ऑफ डायरिया है, तो उसमें हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज यूज, सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू हम लिमिटेड रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम हॉस्पिटल के विजिट्स नहीं कर रहे, हम डॉक्टर के क्लिनिक को विजिट नहीं कर रहे, हम घर में ही मेडिसिन को यूटिलाइज कर रहे हैं। रिड्यूसिंग बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम थ्रू सेल्फ मेडिकेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, this is a summarized study related to self-medication practices in Pakistan. पाकिस्तान में up to my knowledge 15 research articles conduct किए गए हैं related to self-medication. इसमें एक स्टडी जो है वो न्यूजीलैंड में कंडक्ट की गई है, बट पेशेंट था पाकिस्तानी मदर्स जो पाकिस्तान से मेडिसिन परचेज करके लेकर जाते हैं फॉर सेल्फ मेडिकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो भी एटलीस्ट पाकिस्तानी पॉपुलेशन को ही डिनोट कर रहा है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन उसको अगर इमिग्रेंट्स होते हैं वो किसी और कंट्री में भी जाते हैं तभी वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। ये जो स्टडीज है, यूजुअली दी स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन मेडिकल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कुछ कम्युनिटी पेशेंट्स पे, कम्युनिटी जो लोग हैं उन पे भी ये सेल्फ मेडिकेशन की स्टडी हो चुकी है। These are also the summarized studies conducted in Pakistan. Looking for the prevalence of self-medication by these studies in Pakistan, this range from 15% to 100%. और ये जो 100% है ये वही न्यूजीलैंड वाली स्टडी थी जो 23 मदर्स पे कंडक्ट की गई थी और उनसे वो क्वालिटेटिव टाइप ऑफ स्टडी थी, उनसे इंटरव्यूज लिए गए थे रिलेटेड टू सेल्फ मेडिकेशन। वो अपने चाइल्ड के लिए उसको सेल्फ मेडिकेट करवा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन की जो स्टडीज़ है वो कहाँ कहाँ पे कंडक्ट की गई है। तो पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन खैबर पख्तूनख्वा में एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिसमें प्रिवेलेंस वाज रिपोर्टेड टू सेल्फ मेडिकेशन प्रिवेलेंस वाज रिपोर्टेड टू बी 26%।
Besides this, Punjab में 3 studies conduct की गई हैं. Self medication prevalence was reported to be average prevalence of self medication was 44%. सरगोदा में एक स्टडी कंडक्ट की गई है और वहाँ पे इसमें जो सेल्फ मेडिकेशन की प्रिवेलेंस थी वो 34% थी. इसके अलावा कराची में 4 स्टडीज कंडक्ट की गई है जहाँ पे इनकी एवरेज सेल्फ मेडिकेशन की प्रिवेलेंस 79% रिपोर्ट की गई थी. एबटाबाद में 2 स्टडीज कंडक्ट की गई है और इनकी एवरेज सेल्फ मेडिकेशन की प्रिवेलेंस 97% थी. This is too much high prevalence of self-medication. इस्लामाबाद में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और इसमें सेल्फ मेडिकेशन की प्रिवेलेंस 32% थी. रावलपिंडी में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन की प्रिवेलेंस 52% थी. इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, लेकिन इनमें जो स्टडी पॉपुलेशन था वो इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लिया था और वहाँ पे इस तरह स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कहाँ से कितने कितने स्टूडेंट्स लिए गए थे, बट जनरल सर्वे किया गया था, ऑनलाइन सर्वे शेयर किया गया था और इसमें जब इन्होंने सेल्फ मेडिकेशन की प्रिवेलेंस देखी है तो वो 83% देखी है. अब यहाँ पे अगर हम इसको पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो डिफरेंट areas still they are uncovered related to the self medication prevalence. और अगर हम बैक स्लाइड्स में तो different population जो सेल्फ मेडिकेशन वो भी उस पे भी स्टडी ऐसा पाकिस्तान में नहीं की गई. प्रेग्नेंट वुमेन वहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन जो है किस तरह है. बात करते हैं रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट्स या हेपेटिक इम्पेयर्ड पेशेंट्स में. इस तरह अगर हम बात करते हैं उधर सेल्फ मेडिकेशन Ma'am, kindly unmute yourself. Now talk about role of pharmacist in self-medication. Pharmacists have a lot of role in self-medication because pharmacists act as a communicator with the patients, with the healthcare professionals, including physicians, nurses, with all the available healthcare professionals. So pharmacist hazards of self-medications भी communicate कर सकता है. इसके अलावा hazards, इसके अलावा benefits of self-medication, not just hazards की हम बात करेंगे, हम benefits की भी बात करेंगे. क्यों? क्योंकि we have explained that it is a cost-effective, it is easily accessible method of medication. So pharmacist ही किसी और को बता सकेगा कि what this adds to. इसके अलावा pharmacist act as a drug dispenser. So during dispensing, he can communicate and educate the patient related to self-medication benefits and hazards. Pharmacists act as a trainer to the healthcare professionals, trainer to his own colleagues, trainer to the public, trainer to the
फार्मेसी स्टूडेंट्स बिकॉज अगर हम जो प्रिवेलेंस देख रहे थे पाकिस्तान में तो वहाँ पे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी थे जिसमें वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे सही और मोस्टली जो स्टडीज़ थी वो मेडिकल स्टूडेंट्स पे ही की गई थी और वहाँ प्रिवेलेंस भी सेल्फ मेडिकेशन की मेडिकल स्टूडेंट्स और फार्मेसी स्टूडेंट्स की ज़्यादा थी तो मे बी दे आर यूजिंग the proper or appropriate self-medication, but pharmacists should have training related to self-medication to all these population. Pharmacists act as a collaborator to the regulatory bodies, to the healthcare professionals, ताकि जितने भी aspects हैं हम self-medication को prevent या appropriate self-medication को करवा कैसे सकते हैं ठीक है तो वहाँ पे collaborator काम कर सकता है different public campaigns करवा के different regulations में involve होके ताकि कम्युनिटी फार्मेसी से इजीली जो है ऐसे मेडिसिन जो हैजर्ड्स कॉज कर सकती है वो इजीली एसेसिबल ना हो या फिर अगर मेडिसिन डिस्पेंस की जा रही है उस दौरान प्रिस्क्रिप्शन ली जाए उसके बाद मेडिसिन डिस्पेंस की जाए हेल्थ प्रमोटर बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन है तो इसलिए बेनिफिट्स को बताने के लिए भी फार्मासिस्ट इनको हेल्प कर सकता है फार्मासिस्ट लेबलिंग में कैसे प्रमोट कर सकता है ऑन द ड्रग लेबल्स सेल्फ मेडिकेशन के बारे में भी लेबलिंग होनी चाहिए और जो यूजुअली बहुत ही कम होती है हमारे सेटिंग में बाकी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू सेल्फ मेडिकेशन रिलेटेड टू एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड टू बेनिफिट्स ऑफ अप्रोप्रिएट सेल्फ मेडिकेशन रिलेटेड टू हैजर्ड्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन में भी फार्मासिस्ट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट में हेल्प कर सकता है बाकी मैंने रिसर्च कंपोनेंट काफ़ी सारे पॉइंट्स जो आर्टिकल्स रिलेटेड टू पाकिस्तान में कंडक्ट हुए हैं और जो अभी जिनमें लैकिंग है जो लिमिटेशंस है हमारी वो भी मैंने कुछ हद तक बता दी है तो वो इसमें भी हम सेल्फ मेडिकेशन में इसमें प्रमोट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ओवर टू यू मिस राबिया Thank you, ma'am, for providing us with such insightful and effective knowledge. Now, I would like to invite the next moderator, Saad Abdullah. Over to you, Saad. Thank you so much, Rabia. Thank you so much, the renowned speaker, Dr. Sidra Noor. And now I would like to introduce my speaker for today's session. Sir. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam. Am I audible? Yes, sir, you're audible. We have Dr. Muhammad Kamran Rashid with us. He did his MSc in clinical pharmacy and PhD in pharmacy practice from UK. Dr. Kamran is practicing clinical pharmacist, academician, preceptor, and healthcare services researcher with 20 years of diverse experience in the United Kingdom, Pakistan, and Saudi Arabia. Dr. Kamran has successfully worked on establishing pharmacist-run clinics and AMR programs in hospitals and published research to improve community pharmacy. Sir, we are very thankful that you have given us your valuable time. Over to you, sir. Thank you, Saad, for the nice introduction, and thank you Giving Back to Pharmacy for giving me opportunity to speak today in front of my lot of fellow pharmacists, and really enjoyed some of the nice presentations from my fellow colleague. So as we have a paucity of time, we would like to introduce or start our, I think I have to share the screen now. Sound. Is my screen clear? Yes, sir, your screen is visible. Okay. So today my topic is Empowering Health, a Guide to Diabetes, Medication Therapy Management by Ambulatory Pharmacists. I have no financial relationship to disclose, and I'm not going to discuss any off-label use or investigational use in my presentation. So first of all, what would be my objectives of my lecture today? And at the end of a limited 20 minutes, what I would like all the pharmacists to understand. Number one, we need to understand the alarming rise, I would say, epidemiology of type 2 diabetes. I'm going to speak type 2 mainly because of the paucity of the time. So we need to understand the epidemiology. We need to understand the mortality and morbidity with type 2.
and learn about how we can establish PLDC, which means pharmacist-led diabetes clinic in ambulatory care settings. What are the expectations of those clinics, and how we can provide patient education and counseling in diabetes mellitus. So first, we need to understand the rising prevalence of diabetes in Pakistan. In front of you, there's a data from 2016 and 17, a study conducted by Azim et al., and shows that, if you can see, only in Punjab, you have a total diabetes, which is diagnosed, is 30.2. It means 30.2 of the population of the Punjab is actually diagnosed with diabetes. And pre-diabetes, if you can see it here, is about 15.1%. So you can say that almost half of the Punjab population is either diabetes or pre-diabetic. The situation is no less worse than Punjab and Sindh, where 32.3% of the population is suffering from diabetes. However, we can see a lower trend in Khyber Pakhtunkhwa, which is 13.2%, and Balochistan, which is 30%. But we can say that these figures are for those patients who are diagnosed. There are overwhelming majority who remain undiagnosed and maybe could not afford to go to a doctor for diagnosis. While if you can see the pre-diabetic patients population, it's alarming. Almost 50% of the population in Balochistan is suffer from actually pre-diabetes. It's not even diagnosed yet. So you can say that this is an alarming trend in Pakistan, where almost every third person is either suffering from diabetes or pre-diabetes, and there's an overwhelming load on secondary and tertiary healthcare centers across Pakistan to deal not only with diabetes, but also complications of diabetes, which our fellow colleagues just said, that chronic kidney diseases, cardiovascular diseases, diabetic-related neuropathies, glucomas, and you name it. So you can say that about 440,000 Pakistanis have died. This is reported from complications of diabetes in the year 2021 alone. I am presenting you a report from Azim et al. And Basit et al., which says that actually what are the reasons for this diabetes? Diabetes is actually a mix of genetic predisposition and economic and environmental factors. So for the genetic predisposition, if your mother, father, grandfather have diabetes, there is nothing you can do for it. But for environmental factors, rising obesity, which is like 58%, they cause diabetes. Tobacco use, 14% in Pakistan, which is reported, which may be higher. Lack of exercise, increased availability of food with high sugar content, high carb level, is contributing to diabetes and complications of diabetes. If you can see on your right-hand side, you can see that the diabetes can be the mother of other illnesses as well. It can affect your eye, like glaucoma, damage eye blood vessels, causes retinopathy, cataracts, etc. Kidney damage. For if the diabetes remain unmanaged, can affect the kidneys, which could lead to high blood pressures, chronic kidney disease. Neuropathy is quite common in patients with unmanaged hyperglycemia, which can damage nerves in the peripheral nervous system. This may result in pain or numbness, etc. Could lead to diabetic foot ulcers and amputations maybe. Macrovascular diseases from diabetes included very high risk of stroke actually, and ischemic attacks, cognitive impairment. Diabetes patients, it is difficult to treat blood pressure. In diabetes patients, they have peripheral vascular diseases. A lot of issues can come out. Diabetes, which is actually a lifestyle disease and which can easily be managed in primary healthcare settings. So leaving aside all these horrible figures, what as a pharmacist we can offer and we can do, rather than moaning about the problems and complications we have, we are sitting at the primary healthcare center. Okay, all the community pharmacists are termed as primary healthcare centers. All the ambulatory care pharmacies in the hospital settings are the focal point of the primary healthcare center, where you see a lot of patients. So what you can do, number one, where, when, and how we can establish pharmacist-led diabetes clinics. First of all, in order to establish these clinics, one must need a diabetic certification, okay, whether from a certified authority. However, if you do not have a
diabetes certification, you can still do a lot of things. For example, you can offer lifestyle advices, you can monitor a lot of things like their HbA1c, their complications, refer them to the specialist. A lot of things are non-certified pharmacists can also do in pharmacist-led diabetic clinics. So what are the ideal settings? This is who can do it, down where we should do it. Ideal settings of establishing pharmacist-led diabetes clinics could be the outpatient clinics. And of course, you have to establish these clinics with the help of the hospitals you are working on, or with the clinics, with the diabetes clinics, with the physician, okay? Because you get all the patient data from the physician, and actually you are helping them in managing the diabetes as well. Outpatient clinics, even you can establish, and we have established diabetes clinics in the lobbies, auditoriums, or even malls. We can set up a diabetes, a small program in the malls as well. And believe me, a lot of patients will going to come and get benefit from it. Next thing is to invite patients and caregivers through their physicians in advance. If you're working in hospital, you can get access to outpatient clinics, and you can publish brochures or programs announced through social media and etc. at least 2 weeks before, but preferably 1 month before. Announcement through media, notice boards, outpatient clinics, primary healthcare centers, through brochures, pamphlets, etc. If you prepare brochures in advance in Urdu with pictures about the dietary plans, about the self-monitoring, about what to take care of in diabetes, it would be helpful, because majority of population can read Urdu better than the English language. Okay, so what are the objectives? What we could achieve from the pharmacist-led diabetes clinics? As I said, that the diabetes is an alarming proportion, and there's overwhelming pressure on hospitals and tertiary care centers to manage, especially patients come with unmanaged diabetes, which is like severe hyperglycemia, or they already have diabetes complications, then they go to hospital or to a diabetic specialist. So it's important to prevent diabetes at the community setting, not only prevent, but prevent pre-diabetes as well, manage pre-diabetes, and taking care of patients who already have diabetes through lifestyle advices, non-pharmacological measures, diet advices, effective monitoring. Diabetes can effectively manage by following a dietary plan and monitoring at home. So objectives. The number one objective is to target hemoglobin A1C, which is the 3-month ratio of blood glucose level. Lipid profiles, BP goals should be monitored and recorded in those clinics. Comorbidities should be recorded. Tailored lifestyle modifications. You should take all the history of the patient and advise the patient-centric lifestyle advices. Okay. Drug therapy regimen, a pharmacist should guide the diabetic patients about the right selection of the drug, dose, route, frequency, and duration. The monitoring parameters should do it and guide patients accordingly. And in the end, the most important is patient education, because in the end, patient is in charge of the therapy. Neither the pharmacist, not the treating physician, not the nurse, not the laboratory technicians, patient. So patient education is important. You should educate the patient according to his or her health literacy level, that how the patient should adhere to and how it's important to adhere to the diabetic medication, how it's important to take care of his diabetes through effective monitoring, and follow the treatment plan. So what to do in pharmacist-led diabetes clinics? The most important thing is to collect the data. Okay, some hospitals, they do have the patient data which they can give it to you. However, data collection is very important. Age, family history, obesity, gender, whether the patient is smoking, what kind of occupation the patient have, self-monitoring of blood glucose, whether the patient perform self-monitoring of the blood glucose or not, symptoms of complications the diabetic patient could already have hypertension or ischemic heart diseases or renal diseases or neurological diseases, any food problem or eye problem should be recorded in a form. Okay, you should have a prepared form where you should record all the information of the patients. Characteristics of the diabetes, what type of diabetes is it,
how long the patient is suffering from diabetes. If he's using, in our country, it's common. You can see even in the walls, Shartiya Ilaj of diabetes. So these things should be, people even follow it. People take a lot of herbal medicines, homeopathic medicines. This should be recorded as well. Specific symptoms, if the patient have any hypoglycemic episodes or hyperglycemic episode. And again, you should avoid any medical jargons. Don't say hypo or hyperglycemia. Say that if in any case your sugar levels becomes higher, or you feel dizzy, or weakness, etc. Social and cultural issues are also very important and essential in our part of the world, where people do not have good health literacy. So you need to advise patients based on their health literacy. Okay, it's very important. Affordability is also an issue. So see if the patient could afford the medicines or treatment which you are offering or not. Value and beliefs of the system of the patient should be respected as well. Physical exams, age, weight, BMI, BP, heart rate, food exam should be performed. Any of these or all of these, if depends upon the level of clinic you are establishing. Labs are also important to note down here. All of them or any one of them, especially HbA1c and serum creatinine is important. Not all of the labs should be seen or performed in all the patients, because not everyone can afford it. So number one thing you have to do in the this diabetes clinics is dietary advice. People, and overwhelming majority of the people, especially in our part of the world, are confused what to eat in diabetes. People normally think that just stopping sugar is enough. They don't know about that all carbs, all carbohydrates resist blood sugar level. Protein and fats are okay, but if taken in a specific amount of time. However, all carbs, and they don't know which carbs have which glycemic index, don't have any clue about glycemic load and how much they should eat or drink. So here is the pharmacist, which should prepare a chart having Pakistani food and in Urdu language and give it to them. It's very important. If you can access it, yes. If you cannot, prepare it. Each meal, like I said, at 4 to 5 carbohydrate portions, 60 to 75 grams of carbohydrates is enough. If you are taking in oral medication in diabetes. Glycemic load is a better predictor than glycemic index, because glycemic index tells you, okay, the carbohydrate goes into your stomach and breaks down into sugar and how much that index is. But load is important, and how much carbohydrate is present in that food. Like I said, that rice is the most consumed food. If you see that the rice glycemic index is high, the glycemic load is low. For patient, it's not about the quality of the carbohydrate, which is glycemic load is high or low. It's the quantity. A diabetic patient can eat rice, can eat potatoes, can eat pasta or the bread, but in limited quantity. Ideally, if you see one plate, only a third part, 30% of your plate should have carbs, ideally. And the rest of the plate, like 70%, should have protein, fruits, and vegetables. And that's the best and simple advice you can give it to the patients. However, all diabetic patients must avoid any processed food. Processed food, what does it mean? It means biscuits, chocolates, any packaged food, frozen foods, any food which is like available in with artificial sweeteners, artificial colors, all are very harmful for diabetic patients. White breads, avoided. Sugary drinks, any kind of juices, any kind of cold drinks should be avoided. Sweet dishes should be avoided as much as patient can. However, if the blood sugar level is managed, a diabetic patient can easily take one sweet dish per week or even twice a week. It's okay. So another important point is self-monitoring of blood glucose at home. Maybe you can say that not many people can afford the machine or the strips, but at least they should monitor it every day. If not every day, at least 2-3 times in a week. Why it's important to know if the medicine is working or not. You cannot say that this medicine is working without looking at their blood glucose level and HbA1c level. So what is the best time to monitor the blood glucose? Again, before meals or snacks, at bedtime, before exercise, when the patient suspect low blood glucose, and before performing critical tasks like driving, etc.
However, postprandially or occasionally after food, a patient can also measure the blood pressure. This is very important point, diabetic food care education. Just from last week, I have seen like 5 patients of diabetes who have a small, you can say in Urdu, dana and something like that, and they don't care. It's important for diabetic patients to remain having diabetic socks. If they cannot afford to wearing diabetic socks, they should wear socks at home. It's not recommended to walk or run or do any household chores without wearing any sandal or shoes or socks. Trim nails regularly and report any sign of cut, abrasion, or anything to your physician, because it can lead to infections, amputations, gangrene, etc., if it's unmanaged or if people have careless attitude towards it. Is it okay? And then other self-examination for diabetic patients include consult an ophthalmologist annually, at least once in 1 year, because diabetic patients with a period of time could develop a cataract or maybe glaucoma if it's not managed properly. A woman of childbearing age, pregnant woman, lactating woman should see specialists. Whether if you see any pregnant woman or lactating woman in your diabetes clinic, refer them to the specialist. Annual renal examination like serum creatinine level should be monitored annually. If the patient is taking metformin, then annual vitamin B12 level should be monitored as well. Consult a dentist for any periodontal examination annually, especially people in middle ages and old ages. If they want to do any dental extraction, any filling, any dental teeth replacement, then they need to make sure to tell this to their dentist so that the blood sugar level, blood pressure level should be measured before the procedure. Consult a psychologist if the patient you see that having anxiety or depression issues. This is also common, especially in the teenagers or young people having diabetes mellitus type 1. So moving on forward, because we have less time and I'm taking more time, I've said that 18 minutes have already passed. The most commonly used medications and what you can give the advice. Like metformin, some people actually have nausea or especially gastrointestinal disturbance while taking metformin. So best time to take metformin is with a meal in the morning or evening, if it's 2 times, with plenty of water, because plenty of water actually helps in the elimination of metformin. No alcohol should be consumed with metformin and is contraindicated if the patient has serum creatinine of 1.4 milligram or deciliter or less. Avoid metformin, beta blockers, and fluoroquinolones. This is important because some people might have respiratory tract infections while diabetics, and they could avoid fluoroquinolones because they can mask the symptoms of hypoglycemia, and fluoroquinolones mask symptoms of both hypoglycemia and hyperglycemia. Monitor B12 annually, and if it's less, the supplementation of B12 should be given with metformin. Renal function, blood box burning is lactic acidosis, but it's a rare side effect, but it could happen, especially if metformin is given with drugs which also promotes lactic acidosis. Glimepiride is another very important drug. Again, it should be taken with food, but it can cause hypoglycemia. This is why it should be taken with food. Never say that it should be taken before food. Patient might be confused. Use a sunscreen. There are sulfonylureas and there are sulfur drugs. Sorry, and patient should use sunscreen because it can cause sunburn if people exposed to excessive sunlight. Increased risk of hypoglycemia if these medications are used with beta blockers, NSAIDs, fluoroquinolones, and SSRIs. SSRIs, like I said, venlafaxine, etc. NSAIDs also promotes, hyperglycemia. Sitagliptin is another important drug. Risk of hypoglycemia is increased in sitagliptin than even glimepiride. It should also be taken with food. The infrequent side effect of sitagliptin is it can cause nasopharyngitis, which is an infection. All diabetic patients should avoid steroids, but especially with sitagliptin. So monitor renal function and amylase periodically with sitagliptin. Canagliflozin, again, it should be taken before the first meal of the day. Be aware of symptoms of foot ulcers, pain, or tenderness. All the patients who are on canagliflozin should be counseled against hypoglycemia and any tenderness or pain develop in the food.
It is contraindicated in severe renal impairment, and black box warning of canagliflozin is lower limb amputation. So this is why our patient should inspect the feet regularly. However, the other gliflozin like empagliflozin do not have black box warning of lower limb amputation. So in conclusion, what you're going to achieve from this? If you are a certified diabetes educator, you can change the genetic substitution or even therapeutic substitution if you're authorized. However, if you're not authorized, then you can write a pharmacological changes and recommendation to the physician, which could include the change of drug based on physician's HbA1c level, blood glucose level, creatinine level, drug-drug interactions, ADR, etc. You can recommend a change in dose, duration, and frequency as well, and this could greatly help the patient. Refer patients to consultation if the patient would like to take and help in a smoking cessation. Don't tell the patient stop smoking. No one going to stop smoking. Or attend a smoking cessation program or guide them how they can stop smoking or any other tobacco use. Nephrology consultation, you can refer if you suspect that the patient's renal level is not right, serum creatinine is low, and the patient needs referral, refer to the nephrologist. Ophthalmologist, of course, the patient complaint in the eye, etc. Dentist, psychiatrist, etc. So referral here is also very important, and it can be through you. Patient counseling of non-pharmacological measures, like I said, that lifestyle advices, again, recommend exercise to patient depend upon what the patient can do, right? It's important. Medication adherence in diabetic patients is very important. Many studies have concluded that overwhelming majority of diabetic patients actually in Pakistan are non-adherent to medications, which could lead to serious complications. Diet plan, self-monitoring of blood glucose, personal care are very important. I'll give you and share one experience of me in a diabetes clinic. Shall I talk in Urdu or English? I'm not sure if everyone can understand the Urdu here. Or maybe some people maybe from outside Pakistan. So there's a thing that I was attending a diabetes clinic, and there's one person who came with his grandfather, Dada. And he said that my Dada is telling me that मुझे जो diabetes हो गया है 70-75 years में, ये मेरे गुनाहों की सजा है. So I'm not going to take any medications. So तो इनको मैं कैसे जो है ना convince करूं? So I told him, just convince him that if he will not take any diabetic medication, something like that, वो ऐसा नहीं है कि वो फौरन मर जाएंगे. उनको और वो जिन लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, वो उन पे और बर्डन बन जाएंगे, क्योंकि उनको डायबिटिक फूड अल्सर हो सकता है, उनकी किडनी फेल हो सकती है, वो नजरों से अंधे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. थोड़ा डराया जाता है और थोड़ा सा उनको ऑप्टिमिज्म भी दिया जाता है. तो अगर वो सब कुछ अटेंड करना चाहते हैं और रिमेन हेल्दी चाहते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि वो उनकी एज में वो बर्डन बने अपने बच्चों पे या अपने पोता पोती पे, तो उनको ये दवाएं खानी पड़ेंगी. अदरवाइज उनके बच्चे सारी जिंदगी जो है वो, जब तक उनकी जिंदगी है, हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रहेंगे और उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. तो इफ ही लव्स हिज सिबलिंग्स, his grandchildren, his children, then he should listen to them as well. And actually some of these things works as well. So I would say the clinical pharmacy is just not about studies and memorizing things. It's also art of communication, which you should learn out of counseling. We should give it to the diabetic patient, and it actually works. But remember who you are talking, whether the patient is a woman, a man, a child, a working colleague, a student, poor man who cannot afford. So based your counseling and advices based on the socio-demographic factors, psychosocial factors of the patient, rather than just give a generalized advice to everyone. So that's my conclusion, guys. If you have any question to me, and that's my, I hope I finish on time, Saad. Thank you so much, sir. It was a very learning experience to hear from you. Jazakallah. And if anyone have any question, we will forward it to you. Jazakallah. Yes, sure. And over to Ms. Faiza Qamar. Assalamu alaikum. This is Faiza Qamar. Basically, by profession, I am a pharmacist. I, Faiza, welcome you all to the 4th International Innovation in Pharmacy Conference. The title of our next session is Vancomycin, Therapeutic Drug Monitoring Using Area Under the Curve. Minimum inhibitory concentration. Let me introduce our faculty for this session. We have Dr. Neha with us.
She is a 22 PharmD graduate from Quaid-e-Azam University and currently working as a resident pharmacist under the ASHP International Pharmacy Practice Residency Program, Year 1 at Shifa International Hospital in Islamabad. She is GCP certified and NPS certified in medication safety. Please welcome Dr. Neha Tahir. Assalamualaikum. Thank you so much, Faiza, for the wonderful introduction. I hope everyone is doing great and having some great insights from the conference. Well, before we move into the presentation, I would like to take a moment to thank and appreciate the team of Giving Back to Pharmacy in Pakistan for providing this educational platform to so many pharmacists and for allowing me to be a part of it. Well, with that, let's move on to the topic of our discussion. Right, are the slides visible? Yes. All right. So the topic that we'll be talking about is vancomycin therapeutic drug monitoring using area under the curve over minimum inhibitory concentration ratio. So I'll be using this term a lot, AUC over MIC. So it means area under the curve divided by minimum inhibitory concentration. Well, first of all, I need to make this disclosure that I have no financial relationship to disclose and that I will not discuss off-label or any investigational use in my presentation. With that said, what are we going to discuss in this discussion? Well, we'll be talking about the introduction of vancomycin, area under the curve, trough level, why is it important, guidelines, and finally the references. Vancomycin, as we all know, it's a glycopeptide antibiotic which inhibits the bacterial cell wall synthesis by blocking the glycopeptide. It's a pregnancy category C, which means that it is a safe drug with monitoring. Well, vancomycin is a reserved or a first-line therapy for MRSA. By MRSA, I mean methicillin-resistant Staphylococcus aureus species. And when we'll be talking about the TDM of vancomycin, MRSA infection will be the topmost priority. Next up, I am talking about area under the curve. So what is area under the curve actually? Area under the curve represents the total cumulative drug exposure in the blood over a period of 24 hours. And the term to remember here is 400 to 600 milligrams into R per liters. Next, we have trough levels. Trough level is the lowest concentration of any drug in the patient's bloodstream. The term to remember here is 10 to 25 milligrams per milliliter, and we'll be coming back to this later. Well, why is the therapeutic drug monitoring of vancomycin important? Because there is a relation, or you can say a change, a difference that can occur from efficacy to toxicity of vancomycin if the doses are not adjusted or if the doses are not individualized. Secondly, the traditional method of monitoring vancomycin is through troughs. So instead of providing a new method, what the researchers did is that they developed a relationship between trough and area under the curve for the ease of the healthcare professionals. When we talk about vancomycin in critically ill patients, the critically ill patients are already compromised on their nephro functions, and since they are having a lot of medications being administered to them, the severity of illness exists, and there is a longer duration of treatment which can further reduce the nephro functions. So TDM of vancomycin is critically important, especially in such patients. So these are the consensus guidelines that were given to us by ASHP, IDSA,
PIDSA, and Society of Infectious Diseases Pharmacists, SIDP. And according to them, the therapeutic drug monitoring of vancomycin should be shifted from trough level monitoring to AUC over MIC. And why is that so? Because trough level monitoring results in achievement of subtherapeutic or supratherapeutic values of vancomycin, and it can possibly lead to nephrotoxicity according to the data that they had gathered. So this is a big report that they have included, which includes different points for adults, for pediatric population, in different renally impaired patients. But for the reference of you guys, we have a summary of guidelines which tells us that there should be an individualized area under the curve over MIC ratio between 400 to 600 milligrams into R per liters, especially for MRSA infections. Next up is that the trough only monitoring that traditionally was to be set in 15 to 20 milligrams per liter is no longer recommended. Thirdly, we have the pharmacokinetic model that monitors the AUC over MIC. How are we going to calculate the AUC over MIC? That will be using the Bayesian model that has been backed up by evidence that this model will provide us with the therapeutic doses that are required for vancomycin. And fourth up is that vancomycin is incompatible with other drugs. So the co-administration of this drug should be monitored. And if it's evidently important, then independent lines or catheters must be used. If you want to refer to the entire reports, then you can go to ASHP website, or you can just use the link that has been provided. Well, we'll be shifting from trough to AUC over MIC. So how will this shift, this change will be made? Well, this is not something new. It's just going to be an upgradation of the existing practice. These are some calculators that calculate AUC over MIC for us. The first one is the VancoPK calculator. The second one is ClinCalc calculator, and this one is a Sanford calculator. Well, you might ask that why now? Why are we shifting from a trough to AUC when the guidelines had been given to us in 2020? Well, the reason behind that is there was a limitation of resources. These resources were not available to us freely back then, but now you can get these resources, use them free of cost. So we have switched from trough to AUC by the help of these calculators. In Shifa, our current practice is that we have run a pilot study in our critical care area. And what we are doing is that we are using the VancoPK calculator to calculate the doses of the critically ill patients based on their demographics and the one sample method that is utilized in the hospital, that is the trough only method. I would like to add that these calculators, VancoPK and ClinCalc, these two are based on one sample method that you can just utilize the trough values and then calculate the dose of vancomycin. Whereas the Sanford calculator, it relies on two concentrations, the peak concentration and trough concentration. So at Shifa, since we monitor vancomycin through the trough levels, that is one sample method, so we have opted for VancoPK. And if you ask that why not ClinCalc, then there have been studies that have compared the efficacy and precision of VancoPK with ClinCalc. So they have suggested that VancoPK is more precise than ClinCalc. And till now, we have seen some promising results when it comes to vancomycin dosing. There have been persistent trough levels that have been obtained through this calculator, and a nephrotoxic profile of patients have reduced over time. Well, the conclusion for the entire presentation would be that this is a prime time to switch from trough to area under the curve over minimum inhibitory concentration for vancomycin, because these are an internationally suggested timelines, guidelines, and since trough levels are no longer recommended.
Then what is new is that the top levels should be now utilized to calculate AUC over MIC, which should be maintained between 400 to 600, and the AUC over MIC less than 400 potentiates MRSA resistance in patients. Why is it significant? Because the therapeutic outcomes that are achieved, the drug monitoring is efficacious, there is less cases of nephrotoxicity, and it reduces resistance potential. Now, following this discussion, how can we give back to pharmacy? First up is that just accept and be proud of your identity as a pharmacist. Be visible by your knowledge and liaison with other healthcare professions. Let them know that you are there to help them out and that you share a common goal with them, that is the patient safety and patient care. Next, keep updating your knowledge of new guidelines and work for their feasible adaptation. Just keep on updating your knowledge according to the international practices. And lastly, antibiotic stewardship, it falls in the core of a pharmacist. If you have attended the yesterday's conference, it was primarily centered around antibiotic stewardship. And even today we had certain sessions that targeted the fact that we are the stewards of antibiotic microbial resistance. So with that notion, I would like to end my discussion. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Neha Tahir, for your wonderful presentation. Now I would like to invite next moderator. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I, Zunash Ahmed, welcome you all to the 4th International Innovation in Pharmacy Conference. And the title for our next session is Guiding Students on Importance of Soft Skills. And for that, we will be having our speaker here with us, Dr. Suhail Khan. He is a pharmacist graduate of Hamdard University, Islamabad, 2014 batch, and later on he completed his MBA and LLB. Right now, he's working as a head of sales, marketing, and regulatory. Along with that, he also has his own business setups, and with that, he is a certified Adobe Photoshop, website SEO, taxation, and also an AutoCAD specialist. So I would like to invite Dr. Suhail Khan, and sir, over to you. Assalamu alaikum, everyone. I think everyone can hear my voice. If you can kindly confirm. Yes, sir, you are audible. My name is Dr. Suhail. Already my introduction has been done. Because the session is quite short, so I will just go through it. Basically, what we are discussing today is how important IT and soft skills are for pharmacy profession. So if you see the current scenario of IT skills, they are taking over every field of work. Like whatsoever the field is, the IT is there. If we talk about soft skills, basically as a pharmacist, it is very important for us to be the managers. So soft skills are the part of the management. So these two skills are most important skills, I think, that every professional of pharmacy need. But unfortunately, during our study or during our the university time, we are unable to learn those skills. So I will just give a short introduction to these skills because there is a time bar. So let's start with the session. If we talk about the IT skills, if we talk about the IT skills, the IT skills are hard skills that are linked with working and manipulating technology, because technology is everywhere. आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी इस वक्त यूज हो रहा है कंप्यूटर, और वो एवरी आई थिंक लाइफ के एवरी डेज में इस वक्त जो है ना हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे IT skills are important. और एज अ फार्मासिस्ट, because we are mostly managing things, so IT skills are the most important skills that we should learn. Then the soft skills, these soft skills are basically those skills that are situational.
that helps us in making decisions, in doing projects, in completing the work. So these are the soft skills that we should learn before entering into the profession. If we talk about professional domains, I divided into 5 professional domains that will link to those IT and soft skills that are required for those 5 professional domains. One is industry, second is retail pharmacy, then we have hospital pharmacy, then marketing, sales, and then 5th is regulatory, and then entrepreneurship, obviously. So if you talk about industry, the soft skills that we need, most important soft skill is decision making, because aapko pata hai ki whenever you are in a situation where you have to prepare a batch and you have to manage all those things jahan pe aapne basically ek batch completion deni hoti hai, because there are targets to meet. So at that point, decision making is very important. The right decision at the right time, that is very important in industry. Second skill is teamwork, because you are working with many co-workers, जो आपसे junior भी होंगे, आपके senior भी होंगे. So teamwork is very important. If you can drive your workers, then I think this is the success to every industrial pharmacist, who can build communication with their co-workers, who can bond with them instead of sitting on a chair. Mostly यहाँ पे जो problem आती है, because people are not bonding with their team. So teamwork is very important. Third is communication skills, because the way you communicate your things with the team, that is very important. और उसमें आप जैसे उन लोगों को guide करेंगे, कैसे आप उनको lead कर सकते हैं, that is very important. How you convince them to do things, that is very important. So the third skill is communication skill. The IT skills that you need with the industry profession is number 1, Excel, because many times you have been working in the quality assurance के अलावा नहीं हो सके. Calculations होंगी different, जैसे अगर एक warehouse pharmacist, तो obviously he would be dealing with calculations. Sometimes there are softwares in place, but sometimes there are sheets. So मैंने देखा है कि most of the pharmacy students who graduate, they don't know the Excel. Excel learning is very important. Then obviously you have to work on Word, because thing is that you have to prepare reports. You have to maybe if you are in the QA section, QC section, you have to prepare dossiers. So you have to be you have full command on Word, because otherwise it will take a lot of time to accomplish those tasks. Third is AutoCAD. AutoCAD I recommend, because at senior level, when you will go to like 5-6 years, जब आप एक senior management पे चले जाएंगे, हो सकता है there would be a task which would require designing of the facility, या कोई नई manufacturing facility. So this is your trump card. यहाँ पे आप ये trump card play कर सकते हैं. ऐसी skill जो आप जब वहाँ पे play करेंगे, तो then it would be your success. लोग आपकी respect करेंगे, यार he knows the skill. ठीक है. और obviously the industry always need value for money. So आपको आप जो अपनी इंडस्ट्री को वापस रिटर्न कर रहे हैं, उसमें obviously जब आप एक स्किल रिटर्न करेंगे उनको, तो obviously आपकी जो रिप्यूट होगी, that would go higher. And is retail pharmacy. Retail pharmacy is itself, अगर आप separately इसको लेके चल रहे, then also and also as a employee अगर आप work कर रहे हैं, so it can be like someone initiated a project and they just hand over you with the project के ये आप establish करें pharmacy. So you would be needing project planning and management as a soft skill there. You should know how to plan, how to set deadlines, how to complete those deadlines. ये चीज बहुत important है, जो as a project manager and as a retail pharmacist आपको पता होना चाहिए. Then obviously, because you would be dealing with patients and you would be dealing with prescription, so attention to details, to every single detail जो उस prescription में mention है, to every single detail that is going to be dispensed to the patient, that should be your soft skill. Third is communication, because obviously you are communicating with the patient,
that is the most important part that I still thought that missing among most of the retail pharmacists, because they can't communicate with the customer, with the patient, because अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ खड़े होना है, then there is no need for you. Some other person can be there. So whenever you speak, whenever you communicate, you will tell the patients that you are the pharmacist. You are the guardian of medicine. So you should have the communication capabilities to convince people, to guide people. So this skill is very important. So then IT skills you'd be needing. Obviously, Excel, you would need Excel because you would be making reports, Excel sheets for different medicines. Obviously, for short expiries, for different things, you would be needing Excel skill. You should know how to apply the formulas. So these skills are very important. Number two is Word. Obviously, when you would be giving some reports and giving some, maybe you would be needing some counseling sheets for the customers. So at that time, you'd be needing Word. And the most important IT skills that I would recommend everyone is to work on any POS. You should know the model of a POS, how it works, कैसे उसमें inventory enter होती है, कैसे जो है ना inventory का enter किया जाता है, what are the restraints for getting inventory done, कैसे purchases डालते हैं. This thing, I think a pharmacist should know these IT skills. So moving on to the next professional domain is the hospital pharmacy. If I talk about the soft skills, so most important skill for hospital pharmacy is analytical skill, because there you are purchasing in bulk. वहाँ पे bulk में काम हो रहा है, so you should know, you have the research and analysis and forecasting tool with you. या मतलब आपको उसके हवाले से पता हो कि कैसे forecasting करनी है, कैसे research and analysis करना है to forecast any inventory, hospital inventory, because bulk में चीजें हो रही होंगी, you should be forecasting inventory for ahead of the required time. Then obviously second thing is, most important thing is teamwork. And in hospital pharmacy, the most important co-workers that you should have good relation are doctors. You should have a good relationship with doctors, and they are your team. You should behave as your team, and you should work as their team. So यहाँ पे जो है ना doctors के साथ you should have a proper communication and obviously a team bonding. IT skills that you need is retail pharmacy. So you all obviously need these two tools, because you would again forecasting the products. You would again forecasting for the surgical, for the medical devices. So again, you have advanced Excel and Word. Second thing that's more important is Adobe Photoshop. Why I recommend this tool? Because in hospital pharmacy, you have to run certain campaigns for the patients. So if you have this edge on your end, that you can design a poster, you can design some informational thing, so it would give an edge to your hospital and to your position also, because people will look into you like a professionally skilled person. Obviously, you will provide a value for money to the hospital itself. So moving on to the next scale for professional domain is marketing and sale. It is very important. I think most of the pharmacy professional, if they want to earn money, they go after marketing sales after graduation. So the most important skill that you would need in marketing sale would be communication and interpersonal skills. Obviously, if you can't communicate with the doctors, that would be your customers. You can't generate enough sales, good sales. So communication with the doctors and how you deal with them is very important. Then teamwork, obviously, when you move up in the ladder and you can be the manager, you can be the regional sales manager, then obviously how to lead your team, that's very important here. So you have to develop certain skill set that would encourage your team to perform.
So motivational type of personality is always recommended in marketing and sales. Then obviously critical thinking, how you are making the decisions, how you are forecasting your coming months, obviously, because sale is all about how you foresee the market. So you should have this critical thinking that how you are forecasting for the market, how you are foreseeing the market situation. So this is very important. Then IT skills, obviously you would be needing Excel, because you will always be preparing sales on your Excel software, and you would have some advanced level Excel skills, so that you can calculate your sales, you can give targets to your team. If you move ahead in the ladder with being a product manager or RSM, you would be designing Excel formats for your team. So this skill is also very important. The second important skill is Adobe Photoshop. I recommend this skill here. Why? Because because many people don't want to go into sales and directly want to join from the marketing. So if you want to directly join from marketing, then I think this is the most important skill that you would need, because as a product manager, the designing would be your edge, because you would be designing promotional literature for your team. You would be designing promotional events for your customers. So you would be designing different products. You would be forecasting for your products. So Adobe Photoshop would be important in designing those things. Otherwise, like most of the time, what I see is that product managers are mostly have a sitting with the people who are having those skills, and they would be dependent on those people. Like a designer, they would be dependent on the designer. So instead, if you have the skill of Adobe Photoshop, then I think, or CorelDRAW, then I think you would be on the plus point, that people would be coming to you to get the literature design, to get the promotional thing done. So you have a repute in your office. So this skill is very important here. Then the most ignored segment of our professional domains is the regulatory. If we see the soft skills in here, attention to details, regulatory, it's lacking with the pharmacist, especially the representation or the interpretation of the laws. It's lacking. Pharmacists are lacking these fields. If we see the soft skill, attention to details are very important, because you will study the rules and you will implement them, you will interpret them. So this is very important. Then project management, obviously, because the lineup of your company for initiating any product or for launching any product would depend on your approvals, on regulatory approvals. So how you set the deadlines is very important. Then problem solving, obviously, because you would face a lot of hurdles in solving regulatory problems. So problem solving is another very important skill. If we talk about the IT skill that you would need is advanced Word, because you have to prepare a lot of dossiers and a lot of regulatory documents. So advanced Word is very important. Then ChatGPT, because it's new and it's I think interpreting different regulatory laws. It's very good to learn how to interpret laws from ChatGPT. Okay. If you want to be an entrepreneur, then you have to learn everything, because you will be wearing different hats at one time. You would be a CEO, you would be a designer, you would be a purchaser, a retail pharmacist, everything. So you should be, you should learn everything to get a good entrepreneurial success. Then next we have why IT and soft skills are important for pharmacists, because right now market is highly competitive regarding pharmacists. So market is ruthless. So to compete in those high tide markets, so you should have some extra thing with you, some extra weapon with you to convince your interviewer in the interview, and also to convince your colleague in the afterwards in the professional life, so that they can respect you. They can really think that this person really knows the skill. So for market competition, you should have
the good IT skills, then obviously AI, artificial intelligence, is changing every domain, especially health. They're changing everything. So you should have command on things that are changing. You should change with the changing scenario. Technology need, obviously, the most important thing that we are right now foreseeing is that technology is what in which Sorry to interrupt you, pharmacists sir. are like. Sorry to interrupt you, sir, but we have limited time. This is last line. Okay, sir. Okay. So the last quote is learn continually. There is always one more thing to learn. That is by Steve Jobs. I think time is running out. So if you have any question, you can WhatsApp me regarding sales and marketing, regulatory entrepreneurial skills. So you can WhatsApp me anytime. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for your words and for your time. So for that, all of our sessions is scheduled for the day 2 of the conference have also came to an end. Alhamdulillah. And now I would like to welcome Sir Umar Hafiz for concluding remarks. Over to you, sir. Thank you so much, Zunash. And thank you to all the organizers, all the GBTT team, Giving Back to Pharmacy in Pakistan team, all the collaborators. I'll not take much of the time because I know that we are already a little bit late. We tried our best to complete the sessions in time, but sometimes you have to be a little bit flexible for that. So for the audience, we apologize for that. And I will conclude by thanking our collaborators first. Jinnah Sindh Medical University in Karachi, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Capital University of Science and Technology, Islamabad, and University of Central Punjab in Lahore. Special thanks to Suhail Khan and his team, Pakistan Pharmaceutical Student Federation, because they are one of our collaborators, and we thank them also. Also, I would like to thank all the student volunteers, campus ambassadors, organizers, audiovisual support people, and the one IT team. Next, we have the graphic designers, the people who have done the registration work. All of them, you guys have done a superb job on site, online, everywhere. And in the end, for the scientific committee, for putting such a comprehensive agenda for the topics which they have selected. We hope that it covers all the pharmacy practice, not all, but major pharmacy practice portion, which was our aim. But it is not the end, and we expect for the next year as well comments, feedback, and all your relative things which you want to share with us. We are open in that, and I hope that it will help us to improve as a organization and to deliver a next year more comprehensive topics. Thank you, everyone. Now I think we have to announce the next year's date. If I can share my screen, please. Yeah. Okay. It's visible to everyone? Hello? Yes, sir. Okay, Zishan. So the next year's date for the 5th International Pharmacy Conference, Innovation in Pharmacy Conference, we have finalized our date, which is 20th and 21st September 2024. I wish you all best of luck, and I hope to see you for the next year. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. Yes. Good job, Umar. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.